Hello, hello, girls and boys. How's it going? Good to see you. Let's see who all is logged in. Sir, but webcam, how will we get Zoom link? No, I'll share this link here and you can connect here itself. That's it. As simple as that. All right. So let me know where you guys are logging in for. Hi, Pratap. Good evening. How's it going? Sorry. One second. Just give me 1 minute. Let me take care of this. Okay. All right. Ashdeep Singh. Hello, sir. Good evening. Good evening, Ashdeep. Sagar. HLW. Alam. How are you? शायद. I don't know. HLW का क्या मतलब होता है? HLW meaning. Oh, HLW is hello only. Okay, ठीक है. Hello. Hi, Sagar. Coding gang. Good evening, sir. Good evening. Hello, Nanki. How are you doing? Faizan. Hey, Faizan. Good to see you. Last video so damn nice, sir. Thank you very much, yeah. What did you like about that video? थोड़ा बताओ. Radhe Radhe Tejas. Radhe Radhe. Mrs. Patak, I had to attend this live, but here I am with oily hair and puffy eyes after taking painkillers for headache. I understand. That's okay. Don't worry. We've all been there, Mrs. Patak. Sir, I have a question. अरे हाँ करते हैं यार. रुक जाए एक मिनट. Let me share the link. हाँ. ये लो. Join this. Okay. सर रिमेंबर मी हिमांशु 9th क्लास. अरे यार तेरे को कैसे भूल सकते हैं हिमांशु? तू फिर आ गया. क्या चल रहा है यार? Your videos are very good. Keep them coming. Shamak Javed. Thank you, Shamak. LinkedIn video was really good and helpful with anecdote. Thank you. Thank you so much, guys. Appreciate it. Okay. All right. So I have shared the link. Join this link to ask your questions. ये लो जी, join करो. Old same things, but sir, definitely old guys are an advantage fundamentals. I fear there will be knowledge gap of new people. मुझे उल्टा लगता है यार. मुझे लगता है the newer people have more knowledge than us. मुझे तुम लोगों से डर लगता है. That's how it is. Okay. Can we ask only questions from that forum, not in this chat? Not in this chat, Shamak. The reason is chat and text questions के बहुत options है ना. आप YouTube video पे you can ask me a question, I'll reply. LinkedIn people ask me a question, I reply. Now this is a chance where we get to talk face to face, right? So let's be on camera. Works better, yeah. Okay, so let me add the people who are here, and once you come on camera, then I'll start asking the questions. Hi Ramanjeet, good to see you. Hi Savinder, same here. सत श्री अकाल जी. सत श्री अकाल. ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? All well, sir ji, all well. ਹਾਂਜੀ sir, how can I help? Sir ji, मेरा एक general question सीगा. General questions. I have overall 20 years of experience. Okay. Okay. And I have been in the embedded domain and my in the quality validation career, right?
and Okay. I had a very fruitful career. No problems with Sure. all those. So Sure. of late, I have been very much inclined with regards to SaaS, right? Okay. And with regards to that, I have been trying to prepare myself with Docker, Kubernetes, and then AWS and stuff, right? Hmm. So I'm trying to make a career shift from whatever I was doing, and I have never been into SaaS. Okay. I'm trying to move into SaaS, right? Hmm. So I just wanted to seek your guidance. Is I'm following the right path with learning the technology, or there is something more which needs to be done so that I can make, because it's a mid-career shift, right? And Yeah. Yeah. it carries some amount of risk, maybe. I Sure. don't know, Sure. right? Yeah. So Yeah. the risk doesn't bother me, but yeah. Um, I've attended quite a few interviews, but then again they say you don't have the SaaS experience, you don't have the SaaS experience and all, right? But What? then I try to counter like, well, fine, I don't know the SaaS, but I know networking. Like I am a CCNA expert, I know Hmm. Python, I know how work is done, right? So Right. most people in the industry don't know how the work is done, Correct. unfortunately. Sure. So yeah, what's your So, guidance? um, okay, let me understand this a little bit more. When you say you're trying to learn SaaS, what exactly do you mean? See, when I'm trying to the SaaS technology part, right, and most of it, what I understand is that here more involved is the API testing, right, Uh huh. which takes care, right. So that part of the world, yeah. Okay. And what is your target role once you pivot? Do you have that in mind? I will go at the senior's role only. Will Of go course. into the senior role only. So Hmm. that is my target role as a senior manager itself. I will go in any company. I go as a senior manager role only. Okay. Let me ask you this question slightly differently. In your next role, how much percentage of hands-on technology work do you want to do versus when I say hands-on technical, I mean hands on the keyboard coding versus architectural design, architectural principles, technical solutioning. What's the split in your mind? My this one is more on the architecture side, design side, overall, not into the coding. Like Okay, not makes into the sense. Python coding. Do I know that? But I will more into the architectural wise, how it should be, how to make it Correct. better, right? So that way. That makes sense because that's where you leverage your experience. You can't Correct. fight, you can't know more Python than a 5 year, 10-year guy. Doesn't make sense. Right? They Yeah. will know more. Correct. Right? Correct. Correct. Okay. So now the question is, what kind of interviews have you been appearing for this level? Yeah. For this level, yeah. And what do they mean when they say you don't have SaaS experience? What exactly do they mean? Like I have not experience of the API testing part of the world, like how to do API Okay. testing, right? They say that part. Then edge computing, they say edge computing, right? Hmm. That part of the world. These are the two main things which I have heard. Otherwise, uh, everything else which they ask, like management, handling teams, getting Ah, work that done, you can take. that is all blah blah blah. Only thing is Huh. this API testing and the SaaS experience part is what they talk about. Okay. Okay. So, see, API testing is a slightly niche area, right? Which means you're applying for those kind of roles which involve an API testing experience. That's what I'm guessing. Otherwise, I'm sure you understand what is an API, how to invoke it, how to test it. Fundamentals, you obviously know, right? But Correct. they are looking for something niche for which you don't have experience. That's my guess. It's so Yeah, what I but would because end of the day you have to handle a team, they might look correct. up to you, right? Hmm. Because technically also I have always been hands-on in whatever technology I do, right?
Sure. End of the day, it So doesn't make sense for me that I don't know the technology which I am asking my guys to work on. understood. So in your current organization, are there certain business units which do non-embedded pure software stuff? No, no, no. No. अच्छा, it's purely embedded. तो Yeah, वो option नहीं है. Okay. Um, then what I would recommend is you should pick and choose you should define what role you're looking for. Right. So correct. for example, okay, so see, the challenge is to leverage your previous experience into your next role, ideally, as much as possible, right? Correct. Otherwise, then your merit of 20 years is not getting utilized. That will not work, Correct. right? So now, what you have to think is, let's say the Cognis and the Accentures of the world, tier one consulting companies, what is their overlap where SaaS and embedded merges? Because if you go in as a pure technical architect in one of these, then it will not, there will be probably 1-2% of embedded, maybe zero even, right? It is purely on the software side where then you lose your edge. So somehow you have to figure out the intersection of little bit of embedded world and the software world. I'll give you an example. For example, some companies which do chip designing, right? Let's say a large chip designer who has over the past couple of years acquired software companies. That could be your target, right? Where Yep. even though it's running software, there is still an element of chip design, there is an element of embedded system, there is, that language, so you can relate to it, Correct. right? Correct. So That my I have target companies like, given one example is F5 Networks, right? That okay. is one of my target. Don't give names here. Don't give No, names sorry. on this. Okay, okay, Yeah. sure, sure. Sorry about that. No, what I'm saying with regards to technology wise, I Mm-hmm. I have contacts. I know how to Sure. get interviews in any company. Like any new Right. company, I can get my resume floated and get an interview call for sure. Right? ठीक है. Those all Fair enough. tips and tricks are known. Fair enough. Technology wise, what should I be learning? What I should be trying to master? Right? That is more my focus area. Yeah. So if you are getting into one of these kind of companies and you're looking at a sort of an enterprise architects or solution architect type role, right? That's what you're targeting at. Then you should have a good understanding of at least one cloud. Could be anyone, right? Doesn't matter. So one solid understanding of cloud, then understanding of the container ecosystem, right? The Dockers of the world, and serverless. Mm-hmm. Because some folks operate in serverless, some would operate in containers. So these three, okay? So that will take care of the modern stack, okay? Other than that, the basics of networking and all that you already know. That is not a problem. Correct. Okay. Also, what you should think about is maybe given your background, there could be a very good chance in quantum computing companies for you, Okay. because that is a next leapfrog for embedded systems, Mm-hmm. right? So think about that. Can you enter into a company, maybe even a startup which is operating in quantum computing, merging quantum with cloud? That could be another area to look at, right? What I'm trying to say is, embedded system, how does it look like in 2030? क्या है वो? अभी वो तो खत्म हो गए ना जमाने अभी एम्बेडेड वाले. तो अभी नहीं नेक्स्ट नहीं है, एक्सट्रापोलेशन क्या है? नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स, niche area बट है दैट वो. sheen is gone now, right? You have to reinvent yourself a little bit now. It becomes Yeah. very
very niche then, right? You're trying to broaden yourself, if I understand. Correct. Right? So you have to look at the next evolution of embedded system. In what direction do you want to go? It could Sure. be in the IoT direction. It could be IoT plus AI plus embedded. It could be in the quantum computing direction. And then your experience will be very, very relevant. And if you know cloud, if you know containers, if you know legacy systems, if you know embedded, that makes for a very unique combination, which is very hard to find. Right? So that would be my direction. Build on your Sure. strength, see how it moves into the future, and then learn some peripheral areas, and that becomes your unique combination. Correct. Yeah, makes Yeah, sense. does it make sense? Thank you. ठीक है जी. All right, we do this live every 2 weeks. So if you have any further questions, feel free to join again. We can have a chat. Sure. All right, thank you. Cheers. Bye. Okay, guys. कैमरा ऑन करो यार, बात करते हैं फिर. अरे एक मिनट, मैंने निकाल दिया चैट से. Okay. Hi Uday, go ahead please. Hi, sir. So, sir, I'm just following you since 2 months, sir. It really brought a great impact in my life. So, I just approach you for career guidance, sir. So, what I'm lacking currently is, so I have passed out in 2024. Okay, so Okay. 6 months I have done as blockchain architect, but the field was a lot of fluctuating, so I just quit my job. Okay, so later I started one robotics and neuroscience startup, so which is running okay. So currently I'm worried about my career because I'm not getting where I'm going, because I'm putting my hands on all different boards and I'm not doing anything till end level. It's like not completeness. So I learned digital marketing, I run one edtech startup. So every 3 months I'm doing something new. I'm learning a lot of things, but not good at all. So also in 2020 I started my UPSC preparation, which I left at midway. So my long term Okay. goal is to become a bureaucrat, but Uh, the percentage of qualifying is only 1%. So I have to keep one good backup. So I'm just preparing for VLSI. So I started taking VLSI classes since July. So it's going good, because VLSI career, I feel it's a promising career. Even if all my plans flop, still it will take me somewhere. okay, But Uday, by hang on. Blockchain, VLSI, UPSC. What is going on? What are you trying to do? like I'm figuring out what I have to do, not getting. Yeah, but all of these are very deep fields, right? Yeah. Right. And each one of them requires a very large level of specialization. Yes. Right. So when did you pass out? You said 21. 24. So it's 24. been only Acha, abhi one. pass out. Yeah. Okay. Are you working somewhere right now? I used to work. Right now I'm not working anywhere. It's like Okay. I That left my startup, job. was it your own or did you join a startup? I joined a startup. You joined a startup. Okay. Fair enough. So I learned multiple skills by working with people. That is fine. So, ground reality, today you don't have a job. Yeah. Right? Let's I be don't have real. a job. Yeah. Correct? How long can you survive without a job? How many So, months? so currently I'm doing freelancing, so I'm just making 40,000 per month as No, digital don't tell me marketer. figures. Yeah, that's not the goal. Yeah. Okay. So you're So I doing for can survive. freelancing. So is freelancing taking care of your monthly Yeah. expenses? Are you earning that much? Yes. Yeah. Okay. So which means you don't really have to look for a job. Temporarily, You can continue freelance. but I'm sure after 2 years, I won't sustain more than 2 years. More than 2 years. 2 years. Why do you say that? Because I don't know where it will lead to, because it's not a safe path. I mean, I might make more money, I might make less money, so it's not Okay. a guaranteeing career. It's Fair like enough. चलो next 1 साल पकड़ लो. 1 साल तो चलेगा. 1 year. easily. Yeah. Right? Okay. So in this, and
In a week, how much time do you spend on those freelancing gigs on an average in a week? 8 hours per week. 8 hours per week. That's it. Yeah. Awesome. Then you have a lot of time. Yeah, I have a lot of time. That's why I'm jumping on multiple things. Correct. So what is the goal then? What are you looking for? Sir, my father was a police officer, so he used to work with all bureaucrats. So from childhood, my dream is to become a bureaucrat. So I lost him. So I want to fulfill his dream as a, Fair to enough. be a bureaucrat. But Okay. the chances of qualifying is very less. So if I start my preparation 100%, then I won't survive. It's like my basic survival money I won't get. And again, if I fail, I can't get it. It's like suppose somebody passed out with me in 2024. If he goes to corporate world, he will get 2 years experience. I will get zero experience. I should start as a fresher. So I'm worried about that also. So that's why I have chosen either VLSI career is my future or else bureaucracy is my future. But currently VLSI, if I work on it, 100% I will get a job. So I'm managing both parallelly. Are you doing some courses or learning VLSI? How are you doing it? I joined in Doing the one course. institute, so every day I just go offline. And how long is that course? It's a 6 months course, sir. So in January the course will be completed, and they promise that they will give the job. But I don't want to depend on anyone. But yeah, so Okay. that's the Okay. yeah. So you have two options, UPSC and VLSI. Yeah. Looks like you're not really interested in UPSI. Looks like. Yeah. Right? Because see, UPSC itself is a beast. Yeah. It will take a couple of years to crack. You can't crack Yeah. it Yeah. in like 1 year. It's not a joke. It's not a joke. Yeah. Right? Even I. So looks like you're dropping UPSC, you're going in for VLSI. Right? Hmm. So you're doing VLSI along with this freelancing gig that you're doing. I'm doing Right? UPI. I'm every day morning. I'm going to VLSA class, and after class, I'm just working freelancing 2 hours, and then I'm preparing for UPSC. So that's my Then day. why are you preparing for UPSC? That's exactly my question. Either you do it Because it's properly or you drop it. What's the yes, sir. point? If I do properly, if I won't qualify, then I won't get any survival money. I mean, no job, no experience. And if you do like this, then you will definitely not qualify, right? Yes, तो sir. क्यों time Even I waste कर am. रहे हो ना? Save those 3-4 hours in a day that you're putting in there. Put that in your freelancing and double the money that you're making. Yeah, okay, sir. See, focus, Makes yeah. Hmm. It's very simple. You have to focus on what your end goal is, right? If your end goal is UPSC, then what I would say is continue on, stop your VLSI thing. You have to take a bet on yourself. Yes, sir. It depends on how serious you are, how much of a bet you want to take. If you want to take a bet on UPSC, I would say stop VLSI, focus on UPSC and your freelancing gig. You're spending 8 hours, spend 16 hours. So you make double the money. And even in 1.5 year, you'll have enough to survive for 3 years. That's okay. Yeah, easy. Right? And then do only UPSC. But if you're confused and if you think you can't make it, then buddy, obviously you can't make it. Because Yes. it's a big deal. It's not easy. If you don't want to take that bet, I would say kill UPSC. It's perfectly okay. Focus on VLSI and make sure, forget the institute. If they manage to land you a job, that's great. But with or without the institute, come December, Jan, you should land up a job in VLSI. Yeah. And those 3-4 hours that you save from UPSC, invest in your consulting gigs. So you Okay. make more money. Yes. Okay? Yeah. Thank you, sir. All right. Thanks, man. Okay. Tanmay, go ahead, please. Hello, sir. Good evening. Good evening. Yes, sir. Sir, I have a query that I am currently working in a service-based company for the last 2 years. Uh-huh. I am currently working as server admin.
means Windows Server admin and virtualization engineer. So currently working on Hyper-V and VMware. And Okay. for the last 1 year, I have been studying for DevOps and cloud related roles. First of all, I have tried for internal switch in my project, but due to some team constraints, I am not able to. I talked to my manager, but it didn't happen. So as of now, just 15 days or 1 month, I am trying to switch the company. Uh, Hmm. uh, I know many take CI/CD, containerization, everything, Prometheus, Grafana. But when I search in LinkedIn for SRE roles, it's showing Linux or Unix as primary. I am Correct. currently working as Windows Server admin. So it's currently little bit difficult for me, and also there is another mistake they are wanting for SRE role, that is SQL and no SQL. And for DevOps role, also there is problem that the skills are What's not your matching. question, Tanmay? What's your question? Yeah, I am going into that. Yeah, and for DevOps role, I'm checking that the skills are not matching. The skill set means if I have Azure DevOps as CI/CD, for CI/CD, they are checking Jenkins or for similar for other skill sets as well. So in Correct. such scenario, what will I do? Means I can't learn all skills. Means for CI/CD, Jenkins and uh, Azure DevOps and GitLab, and for cloud Azure AWS, and for SRE roles. If I want to go to SRE roles, what should I do? How should I make them know that I am also good in Linux, means server Okay. administration. I know, Okay. Hang on. Hang on. but Hang on. yeah, 1 minute. Wait. Okay. How many interviews have you given in the last 3 months? actually I'm applying, getting referrals. I'm trying, but getting no interview calls as well. Have you given any interview in the last 3 months? Uh, no. Zero. Yeah. Okay. So, Yeah. which means what you should do is focus on some of the fundamental skills. See, obviously, you can't learn everything. Yeah. And the other problem is you're not doing anything live projects, Yeah. right? I So, did that. you don't I have did that that. experience. I You did don't that. have. Arey yaar, what I'm saying is you don't have valid work experience also. Whatever you're doing on your own, Yeah. right? So see, Unix is very, very critical. You will have to learn it. There is no two way about it. Jenkins is fundamental. You will have to learn it. There is no two way about it, right? If you go to my channel, there is a video. I think 2 videos back, there is a video where I've created a custom GPT. What you can do is, do you use Chat GPT? Yeah. Okay, so it's very simple. If you go to Chat GPT, there is a tab called GPTs. Click on that and search for my name, Savinder Puri. Okay, you will get a custom GPT. That GPT will ask you what you know currently, what are your skills. It'll have a mini questionnaire, and then basis of that, it will devise a roadmap for you. Try that, you will get the answer. Yes, sir. Okay? Sir. If you Yes, sir. can't find it, then about 2 or 3 videos back, old videos, there is a video on this creating a custom roadmap. Have a look at that video. I explain everything in detail. Yes, sir. One more query. Uh, Hanji. uh, I'm saying that I know Linux, but how should I let the recruiter know? Means I'm not actually getting an interview call. So actually, if I get one, I should I might convince them. So as work experience, I does not have any experience on Linux. So it's for in So, my resume Tanmay, it's there is a difficult. lot Yeah. of things to getting an interview, right? Yeah. It is you knowing the skill, it is how you showcase your skill, it is how to um, uh, explain your projects. There is a lot of things. There could be a lot of reasons why you're not getting the interview calls. If you go to my channel, there are a lot of videos dedicated. There is a playlist on how to search for a job. You will get dedicated videos on this topic. You can look at that. Okay? Okay, sir. Okay, Yeah. thanks. Yeah.
Brahmjot, if you go to Chat GPT and search for GPTs, then search my name, you will get that. It's fairly simple. Okay? Okay. Hanji, who's next? Tej, go ahead, please. Hello, sir. Good evening. Good evening. Yes, sir. Currently, I am working. I started my career in a DevOps, and I also landed a job. Completed 2.5 months, and I want to ask question that how I can improvise in my job as we have a three-person DevOps team. I have two Hmm. seniors, and I'm junior. So my day-to-day tasks are like working on Nginx, AWS deployment of a website, also of handling monitoring side. So I want to ask that how I can improve my day-to-day in task in DevOps, also how I can stand out, how I can improve myself more further in DevOps field. So the other two people, are they senior to you? Yes, they are senior. By how many years? One is having experience of 4 to 5 years, and one is having 2 years experience. 2 years, okay. And आपके मैनेजर जो है उनसे बात की है आपने on how to? Yes, definitely. Okay. Yes, definitely And we communicate for task related. no, no, that's not what I'm asking. What I'm asking is, because these guys have only 4 or 5 years experience, have you Yes. spoken to the 4 year experience guy on what else you need to learn? Have you asked him or her? Definitely, he is also giving me guidance on improvement. He is also as I have not done any certification currently. I have started preparation for AWS certification of solution architect. So ठीक है. he told to me get first importance to have a certification so that Okay. company can get trust that you have a valid knowledge of AWS also. Okay. I would also recommend go and talk to your manager once. Okay. Tell him Definitely. that, hey, I want to grow in this company. I want to get better at what I'm doing. I'm preparing for this AWS solution architect certification. What else do you recommend me to do? Okay. That's one thing. Definitely. The second thing is, do you guys work on tickets? Yes. Okay. So then what you should do is, for the tickets which are not assigned to you, when you get some free time, see how you would solve that ticket. Okay. And then go and check with the other person, hey, this is how I'm thinking we'll solve this ticket. What do you think? So that way you get to work on multiple areas. Right. And in 6 months, you should be in a position that any ticket which comes to your team, you should be able to pick it up. Okay. Okay. That should be your goal. But talk to your seniors, talk to your manager, they will help you out. Definitely. Okay. All right. Thanks, Tej. Okay. Shubham, go ahead, please. Hello, sir. Good evening. Hello. Today I Good evening. just joined. My question is, means I'm working in DevOps, Kubernetes, and OpenShift related stuff. My asking is ki how I could start learning AI. Means roadmap ki my day-to-day activities and those stuff. I will start learn AI to implement in this work. Like created GPT is coming. Any proper Hmm. roadmap where I could start and how could I learn? So, firstly, stop looking for roadmaps. Okay. There are no roadmaps. Your roadmap is different. Aryan's Mhm. roadmap is different. Pratap's roadmap is different. My roadmap is different. Right? Yes. Yes. So, I cannot make roadmaps on YouTube. It doesn't work. It is bloody Yeah. bullshit, people who make roadmaps. I also made roadmaps. Right? Yeah. Because people want it. तो क्या करोगे Uh-huh. अभी व्यूज के लिए करना पड़ता है राइट बट Yes. इट इज बुलशिट क्योंकि Uh-huh. जेनरिक है ना वो Mhm. राइट सो द इजीएस्ट आंसर टू योर क्वेश्चन इज in Mhm. your organization figure out how they are using AI, Mhm. right? And Mhm. whatever tools they are using, become a champion of those tools. Mhm. That is the easiest path. Otherwise Okay. AI में तो there are
million things happening. You might Mhm. end up doing something which is not relevant for your organization. Then what? Yeah. Right? So Yes. figure out what tools your organization is using, what they are thinking about. Every Mhm. organization has an AI initiative today. Mhm. You should be a Actually, part of that team. yeah, I'm also planning for switching the job. So industry wise also, key means any popular tools or any upcoming, that way I'm asking. तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू क्वेश्चन है क्या? नहीं, just for learning or secure my career wise. यार अच्छे से हम्म, क्वेश्चन पूछ तो अच्छे से जवाब दूंगा ना. अभी तूने पूरा हाँ कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया क्वेश्चन का. हाँ If your question is, I'm looking to change my job, what do I need to know about AI? Then what I told you is totally irrelevant for you. okay. So ask the right question, tell me the truth, then you will get the right answer. हाँ, Otherwise, I will do some bullshit and it will not matter to you. yeah, got है ना? it. तो हाँ, सच्ची क्वेश्चन पूछ. असली क्वेश्चन क्या है वो पूछ. घुमा मत. मतलब हाँ कि ऐसा जैसे कि क्यूबरनेट्स हर जगह यूज हो रहा है, तो उसके ऊपर कोई एआई जैसा टूल है तो वो स्टैंडर्डाइज होगा ना इंडस्ट्री में, उस टाइप से मुझे एआई सीखना है कि यहाँ वो करंट जॉब में भी यूज हो और स्विच वाइज भी यूज हो, लाइक दिस। वो वेबसाइट पता है, गूगल. हाँ, उसको पूछ ले. ओके। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड तो कुछ नहीं होगा ना. अभी कैसे होगा ना कुबरनेटिस के ऊपर. व्हाट इज द इंडस्ट्री एआई स्टैंडर्ड ऑन कुबरनेटिस? नथिंग. हम्म, हाउ इट इज जस्ट बॉर्न. कुबरनेटिस इटसेल्फ इज नॉट अ स्टैंडर्ड. उसके ऊपर क्या है एआई स्टैंडर्ड? नथिंग. ओके। राइट? सो हाँ, this kind of answer you will not get. ओके। You should have a general knowledge of what is going on in AI in the world. That should be enough. यस, ठीक है? ओके, गॉट इट। Okay, thank you. थैंक यू। हाँ, All right. Azam. अजम ही है ना? ऐसे ही बोलते हैं हाँ अजम. सर. यस सर, यस सर. हाँ जी अजम बोलिए. Good evening, sir. Okay. Good So evening. currently I'm learning full stack with Java, so, but I'm also interested in learning cloud and DevOps. So basically last 1 month I've been exploring all the like cloud related tools. So AWS भी try किया है, and 2025 pass out student हूँ. So I am not able to figure out कि DevOps में career focus करूँ या currently which I am doing like full stack with Java, क्या वो करूँ? कितना एक्सपीरियंस है आपको टोटल? No sir, no experience. 2025 pass out हुआ अभी 2-3 months back graduate होके. नौकरी है? No. तो जहाँ नौकरी मिलती है वो करो पहले. Okay, so but skills नहीं है, so for that I'm doing full stack with Java. So मैं learn कर Then रहा था focus on skills. that. Focus on that. Focus on one thing. Your goal should be to get a job. Okay, sir. Right? All this passion and all will come later. Then cloud Okay. and DevOps में interested है sir, but in that we don't have jobs I think so as a fresher. It's Who difficult. said that? But it's It's difficult I think difficult so. everywhere. It's difficult everywhere. Right? Nothing is easy. Full stack also is full only now. Yes. There are no places there. So what I'm saying is pick one area, stick to that, and get your first criteria should be to get a job. Nothing else matters. So but the AI is coming like it's replacing front end and all, so for that Forget about AI. Doesn't matter to you. You don't today only you don't have a job. What will AI do to you? वैसे भी नहीं है ना नौकरी, क्या ही कर लेगा? correct कुछ sir. फर्क पड़ता है? No sir. If you don't have anything to lose, then why are you worrying? Yeah, forget that. Focus on what you should do now. Your first goal should be to get a job. As simple as that. Doesn't matter what the skill. Focus on that. ठीक है? Okay, Thank thanks. you sir. All right. हाँ जी, अर्श यार लाइट जला ले. अंधेरा सा बड़ा हो रखा है. Hello, am I audible, sir? हाँ, you are audible, but I can barely see you. टर्न कर लो, लाइट आपकी पीछे है. Oh, my bad, my bad. Let me be like हाँ यार this. लाइट जला. अरे हाँ, this is better. I Much guess better. ये ठीक है ना? Perfect. हाँ जी. हाँ जी, so सर एक्चुअली मेरा डाउट कोई क्वेश्चन जो है वो कोडिंग है ऐसा नहीं है, बट
अभी कॉन्टेक्स्ट में आपको दूं ना, तो रिसेंटली आई हैव मेड अ स्विच. मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो है एक, आप लगा लीजिए, स्मॉल स्केल कंपनी में. नाउ स्विच करने के बाद मैं करंटली जिस कंपनी में हूँ उसका स्केल, एस्टैब्लिशमेंट, वर्किंग टीम साइज, हायरार्की, सब कुछ बहुत बड़ा है कंपेयर टू द प्रीवियस वन. एंड सो समवट आई फील लाइक कि यार यहाँ पर अब जो न्यू कंपनी है, यहाँ पर देयर आर पीपल जो मेरे से ज्यादा यंग है, कम एक्सपीरियंस वाले हैं, एंड दे आर ब्लडी गुड एट व्हाट दे आर डूइंग, smarter than me, and I feel like that imposter syndrome ki somehow I got in lucky and I don't belong here. So that is what goes in my head all the time. Okay. And how is that So impacting you? वैसे तो negatively, because although they give me task and I'm able to perform, but वो हमेशा रहता ही है जैसे सर पे तलवार टंगी है कि यार अब अगला टास्क नहीं हुआ तो क्या होगा. बिकॉज एवरीबडी, मतलब आई ट्राइड कि मैं सीनियर्स से ओपन हूँ, बट सीनियर्स ने मुझे पहले ही बोल दिया कि यार वी तो आर हैविंग हाई होप्स फ्रॉम यू. सो आई फील लाइक कि अब पता नहीं क्यों आई कैन नॉट लेट देम डाउन सेइंग कि यार मुझे थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील हो रहा है. ओके. आपकी टीम में कितने लोग हैं? सो देयर आर 5 persons total. 5 people. ठीक है, fair जी. enough. And how senior are they? डिपेंडिंग, एक तो मेरे ही एक्सपीरियंस का है 1.5 years, one ठीक is है. 6 months experience, one is 3 year, Okay. and the other one is 4 year experience. तो ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. दो तो आपके हाँ जैसे हाँ, ही हैं. ज्यादा नहीं है. हाँ हाँ बिल्कुल, बट मैं उन्हीं को देख के मुझे थोड़ा सा लगता है कि वो स्टार्टिंग से यहीं पे रहे हैं, एंड दे आर, मतलब एवरीबडी अराउंड मी, आई फील लाइक कि यार बढ़िया काम कर रहे हैं ना, एंड आई फील लाइक कि लैगिंग, स्लो, थोड़ा सा चीजें समझने में टाइम लग रहा है. देखो अर्श, ये तो होता है. When you go into any large organization, there is a 6 जी. months to 1 year adjustment phase. It happens for ओके. everybody, right? आज मैं भी नौकरी चेंज करके किसी दूसरी जगह पे जाऊंगा, मुझे भी 6-8 महीने लगेंगे संभलने में. Even though I have over 20 years of experience. Why? Because any large organization, they have their own way of working. They have their own technology stack. Everything is different. जी 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 बिल्कुल. Right? तो वो समझने को टाइम लगता है, उसमें कोई डाउट नहीं है. राइट? और वो टाइम सबको दिया जाता है. अब कुछ लोग इज्जत से दे देते हैं, कुछ थोड़ा बदमाशी करके देते हैं, लेकिन सबके दिमाग में होता है कि लड़के को 6 महीने लगेंगे, कोई बात नहीं. अनलेस तुम मेजरली स्क्रू अप आफ्टर स्क्रू अप कर दो, वो बात अलग है. बट 6 महीने दिए जाते हैं. इट डजंट मैटर. ओके. सो अभी स्विमिंग आती है आपको? नो सर. नो सर. तो इफ यू गो टू अ स्विमिंग क्लास and there are people who have been learning swimming for 3 months, they'll be better than you, ना? हाँ ऑब्वियसली. तो ये सेम लॉजिक उधर भी लगा ना. पहले दिन जब पूल में डुबकी मारोगे तो आपको तो लगे मैं तो डूबा आज, मैं तो नहीं जी बचता आज. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. फटेगी, गोते भी खाओगे, नाक से भी पानी निकलेगा, है ना? और वो जी. लगेगा यार वो तो क्या मछली की तरह तैर के चला गया यार, सही है ये तो, मेरे से तो ना होगा कभी. तो 2 महीने बाद आप भी कर लोगे, है ना? सेम लॉजिक यार. बिकॉज दे बीन वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ व्हाइल, दे नो द स्टफ. सो फर्स्टली यू हैव टू गिव योरसेल्फ, कट योरसेल्फ सम स्लैक. इट इज ओके. इट टेक्स टाइम टू लर्न थिंग्स. इट्स परफेक्टली ओके. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज A, you don't make stupid mistakes, and B, you don't repeat your mistakes. As long as you make a new one, it is okay, but don't repeat the same mistake again. Okay? Okay. And don't do जी anything सर. very, very stupid. Right? Of course. If you take care of these two things, you are good. Doesn't matter. Okay? Noted, sir. And for these guys who are around your experience, इनसे दोस्ती बनाओ. इनको अपना दोस्त बनाओ, जरा दारू पी, जरा मुर्गा खिला, इनको दोस्ती करो उनसे. हाँ जी सच सर बोलो, बिल्कुल.
उनसे दोस्ती करो, तो क्या है, हो जाएगा। ये सबके साथ होता है यार, ये मेरे साथ भी होगा आज, डोंट वरी, इट्स वेरी नॉर्मल। एंड स्पेशली व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम अ स्मॉलर सेटअप इनटू अ बिगर सेटअप, इट डेफिनेटली हैपेंस। ठीक है जी सर, आई फील सो रिलैक्स्ड सर, थैंक यू सो मच। बढ़िया, ओके, ओके, थैंक्स थैंक सर। यू। All right guys, Aryan, come on the camera and then I'll talk to you guys. हाँ जी आर्यन बोलिए। Am I audible? Yes, perfect. Right. So I came to this show last time when I was learning React, had some context, had some issues with what to do next and all that. Ah. So I'm here for that again, just for little guidance right now. So I've completed my React. I've moved over to Next.js, made a portfolio website in Next.js, did some routing over there. Not much of backend logic. Now I'm learning backend. So my question to you is basically asking guidance on what should I do when I'm learning backend. And I'm learning Postgres, SQL, and Docker, right? So, what would be your advice on you should learn these things and do these things before Postgres, you end up SQL doing and full Docker. stack? Right. So, what's your advice Docker. on what should I do in order to Huh. So your goal is to become a full Just stack engineer, right? right. So you know front end. Now you know a couple of databases also, right? Right. I worked in MongoDB. हाँ ठीक है. So now you should look at creating a full stack application. Okay, build an application, a small application, and go from front end all the way to back end. Okay, code the entire application. Once you do that, then don't stop there. Also learn how to deploy that application. तो थोड़ा DevOps की साइड में भी चले जाओ. So that way, when you give interviews, you're not just a full stack developer, you also know a little bit of DevOps. Right? You're not gunning for a DevOps engineer role. No, you're gunning for a full stack developer role, but you're multi-skilled. That will give you a very different edge. Okay? That should be your goal. Okay? Right. And also, on how long do you think, if you had to like give some estimates on, you should probably be done by this, like done by learning backend and यार deploying अभी application? How long ये do you तो think तेरी it should श्रद्धा take? पे डिपेंड करता है ना कितनी काम कर रहा है अभी. जैसे मैंने पिछले 15 दिनों में रिएक्ट खत्म कर दिया, नेक्स्ट जेएस पे शिफ्ट हो गया, टेलमेंट सीएसएस सीख लिया, कंपोनेंट लाइब्रेरी से काम करना सीख लिया. तो अगर आप वो when you देख say रहे हो, मतलब खत्म डेली कर दिया, काम what does it mean? नहीं, what does it mean? खत्म कर दिया, एज इन कि whatever was important for me to learn in React, whatever was important for me to know, वेबसाइट डिप्लॉय करने के लिए, वेबसाइट बिल्ड करने के लिए, How many API projects के have you साथ काम करने created? के लिए. How many projects have you I created? have created about 4 projects. Used 4 multiple projects. APIs in these projects. Different APIs, हर बार अलग API use की. ठीक है. Yeah. Are these available on GitHub? Can we look at the source code? Yes, right. It's Okay. available on GitHub. It's been committed, thoroughly documented, and it's like Thoroughly documented. Okay. And will you be able to explain it to them in 30 seconds and in 5 minutes? yeah. ठीक. So that is good then. You're not just learning. It's not like YouTube video देख रहे हो और कुछ notes बना रहे हो. You're actually putting things in practice also. Right. Yeah, तो I'm speed developing अच्छी है. it side by side. That's good. Makes sense. तो speed अच्छी है. I think 1 or 2 months you should be ready then. Looking at that speed. Okay, that's about it. Yeah. When it comes to DevOps, I will jump in next live stream and ask. Sure, yeah. Okay, Thank you. cool. हाँ जी, who's next? तो ये कैमरा ऑन करोगे तो बात करेंगे. रूल्स पता है आपको? हाँ जी, दत्ता बोलिए. Hi, sir. Yeah, good evening, sir. हाँ जी, गुड इवनिंग. Yeah, sir. I am from different field. I am from I currently working in IT support, but I want to switch in networking field. So I watch your videos and get some knowledge from like DevOps and this. But I want to go to the network field. So guide me. How can I do this because I try to study and work, like maintain my daily routine for job, but I am not comfortable and
not follow up this routine. It's very difficult. If possible, then please sir guide me. So when you say it is difficult, means you're not finding time. What is happening? Yeah, yes, not finding time. I think I have time, but I cannot maintain the time. लाइक टाइम है मेरे पास, ऐसा नहीं है। मैं 6 बजे 7 बजे फ्री हो जाता हूँ, 7 o'clock, एंड 1 hour कुछ ऐसे मेंटेन खाना वगैरह मेंटेन करने में लगता है, बाकी टाइम फ्री हो जाता है, ठीक। बट लेजीनेस आ जाता है बहुत। और Okay. मेरे एक भैया है जो मेरे को गाइड करते हैं कि इंटरेस्ट नहीं है, बोलते हैं तेरे को इस चीज में, इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज मेरे को समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली अभी। इंटरेस्ट नहीं है इसलिए नहीं हो पा रहा है। ओके। और अभी आप क्या काम कर रहे हो? व्हाट टूल्स आर यू यूजिंग राइट नाउ? For service now in IT support, managing incident, system checking, configure. But I want to jump in network Why networking? because it's my dream. So how can it be a dream and how can you not be interested in it also? Those two No, no, statements cannot be true, no? no, no, no. I am interested, but some my bro is told me कि you are not interested in this field. Why did your bro say that then if you are interested? Because I tell them कि मैंने उसको बताया कि भाई मेरे मेरे को टाइम नहीं मिलता और पढ़ाई करता हूँ, पर होता नहीं सही से, टाइम मैनेज नहीं होता, तो इसलिए उन्होंने मेरे को ये चीज बताया। तो आपको क्या लगता है, सही बोल रहे हैं वो कि गलत बोल रहे हैं? नहीं, मेरे को तो लगता है कि वो सही नहीं बोल रहा है, पर चीज समझ नहीं आ रहा है क्या, मतलब टाइम मैनेज ही नहीं हो रहा एक्चुअली। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? टाइम मैनेज नहीं हो रहा है या हाँ, इंटरेस्ट टाइम नहीं आ टाइम रहा है टाइम या नहीं, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है। 7 बजे घर आ जाते हो, 1-1.5 घंटा खाना पीना खाया, 9 बज गए, 9 से 12 वीडियो देखते हो, क्या करते हो? 9 से 12, हाँ, फोन पे चला जाता है, कभी कभी स्टडी कर लेता हूँ, और घर पे तो रहता नहीं हूँ, दूर रहता हूँ घर से। उससे क्या फर्क पड़ता है? खाना तो बन गया ना, खाना तो खा लिया ना, अभी 9 बज गए हैं रात के। देख, दो ही सिंपल है यार। इफ यू वांट टू चेंज समथिंग यू विल हैव टू पुट इन द एफर्ट। You decide what you want to do from 9 to 12. What I'll recommend is 9 to 12 you should study. If you want to watch reels, this, that, do that after 12 o'clock. Wake up till 4 in the morning. Nobody cares. But 9 to 12 should be your study time. In that, no touching phone, no watching anything else. Okay, finish your studies for 3 hours and then you watch whatever you want to watch. That is the answer to time management. Nobody else can teach you time management. It cannot be taught. It's a very simple thing. If you don't learn this, if you don't change your job, what happens? वही क्या होगा? जगह पे रह क्या जाऊंगा, कुछ चेंजिंग नहीं उससे होगा, क्या होगा? सेम। उससे क्या होगा? इन फ्यूचर डिफिकल्टी आएगी, अभी भी डिफिकल्टी आ रही है, लाइक पैसा, मेंटेनेंस ज्यादा है, लिविंग कॉस्ट, अभी तो लेकिन अभी चल फैमिलीज रहा है वगैरह ना, को। हाँ, है ना? तो वही प्रॉब्लम है ना, अभी चल रहा है, तकलीफ है नहीं कोई। तो दो ही ऑप्शन है, या तो अभी मेहनत कर लो, मतलब वही है, जब प्यास अभी थोड़ी बहुत लगी है तो कुआं खोद ले, जिस दिन बहुत लग जाएगी उस दिन कब खोदेगा कुआं? कॉल इज योर्स, डिसीजन इज योर्स. There is nothing called motivation, there is nothing called discipline. It is just one decision that you take and stick to that decision. And the answer is very simple. What happens if you don't study and if you don't change your job? If you're okay with that, then drop all of this. ना क्यों परेशान हो रहा फालतू? बढ़िया चल रहा है ऐश कर. लेकिन अगर लगता है कुछ करना चाहिए तो करो फिर. ठीक है, मिला कुछ आंसर? हाँ, ओके, जबरदस्ती करनी थैंक यू। पड़ेगी अपने आप से. मैंने तेरे को एक ही सॉल्यूशन बताया, 9 से 12 पढ़ाई करो, और कोई ऑप्शन नहीं है. ठीक है, ओके.
All right. Hi, Adil. Hi, sir. How are you? Good, very good. Yeah. Go ahead, please. Yeah. So my question is like from past year I've been working in data engineering where I frequently like in a service based company, so they used to switch different projects. So for 6 months I've been working in Informatica, then for 6 months I've been working in talent, then I switched to ADF. So I wasn't getting the growth there, so I made a switch to different company in data analyst. But I'm being confused, like should I switch back to data engineering, as I hear from everybody that data analysis is of more of a business background and it's not in technical. So what should I do in that case? Like should I switch back to data engineering, or I work in data analyst as well right now? What do you want to do, Adil? What is the goal? Y- uh, but the main problem is like that while working as a data engineer, like the too frequent of like technology I couldn't master in there, like there was too, so it's overall like all over the industry is like that, or in company, that specific company had that problem. I'm not able to figure that out. What is there to figure out, Adil? Of course, you have to learn. Of course, every industry needs learning. There is no doubt about that. Right? So, what are you not able to figure out? I don't understand. Are Yeah, you so looking for should a I, solution where you don't have to study because much? because by making switch no I because by making switch like I gave too many like data engineering interviews, but uh, like kind of Hadoop and Spark, and that thing was not my as perfect of mine, as I was still learning that. So like I needed to made a switch to, like I was being stuck for there for 2 years. So I made like I got a better opportunity in a data analyst as, so I joined that. So right now like I want to figure out like should I continue that, as like it's in data analyst also, like there is some portion of Databricks is also involved in like my role. They allow me to have that part as well, do that part, but like I voluntarily accept that task as well. So So, what's your question, Adil, again? yeah, my question is like what career path should I pursue? Because like in yeah, Mm. No, go ahead, go ahead. because like and as you see like data analyst, usually people transition from data analyst to data engineer. I have made the backward, so like kind of a backward transition I did. So that's been troubling, like there isn't a growth in data analyst as such. That thing I'm See, there is no front transition, backward transition, all of that doesn't matter. Right? What matters is in your data analyst role, what kind of job are you doing and how do you get to the next role in your company? What is the next role in that company? And how can you get that? What skills are required to get to that role? That is all that matters. Right? So, whether it is data analyst, whether it is data engineer, you have to acquire the skills to get to the next role. Now, every time, obviously, you can't keep changing companies, right? It won't work. So, what you have to figure out is in your organization, what is the next role? What skills does it need? And you keep growing there until okay. you figure out that, hey, now I can't grow in this organization, I'll have to go somewhere else. That's a separate question there. Okay. Okay. Does that help? Yeah. Thank you. Thanks, Adil. Okay. Tanish, go ahead, please. Very good evening, sir. Good evening. This is my second time with you, and Okay. sir, I want to discuss that I am working on a project FinQ, in which I am a single one that working on that project. Where I start with a team, but now working in a solo on that project. So the Mm-hmm. purpose of my project is
finance tracking system, in which a individual or a family, like a father make the account and add their family and add their budget, Okay. and I provide a functionality that they add their expense and their income and budget, in which all that categorized in a table format with the perfect analysis, in which they don't bother that where they spend their money. The idea of that project comes with when we discuss with our classmates, my classmates, my fellow mates. We discuss that our money is not tracking. We are wasting it. Where it is going? And also we discuss that then when 18 comes, then we discuss that this is a problem in our homes. My mothers, my fathers, sometimes they puzzle that where money goes. Then Okay. we all think that we have to do something to solve this. This is a nice What's your idea. question, Tanish? Uh, What's your question? my question is that I am also want to learn AWS. On that I learn Linux fundamentals, Kubernetes, and networking virtualization concepts. But now my main purpose is to learn AWS. I want to go for the AWS. But my time that goes for my project and my college assignment and my daily stuff, I think I am lacking that to go AWS learning. So Hmm. how is it managed? Is it okay to come go with the project? And my project is going with vibe coding. I am taking the help of perplexity. I am using them, giving my thoughts and arranging the all stuff in a manner way that yes, sir. And once you reach a certain stage, you will also have to deploy this project, right? It'll have to go live Yes, sir. somewhere. Yes, sir. So that will be your chance to learn AWS then. Okay, sir. But sir, I doesn't have a knowledge about now AWS. I learned the basic concept, but अभी तक मैं वहां पे तक पहुंचा नहीं हूँ कि मतलब कि हाँ ये कैसे मैं वर्क वही कर रहा कह है रहा हूँ मतलब ना, या परप्लेक्सिटी से बना लो, यस राइट? कोड तो लिख रहे हो, कोड डिप्लॉय तो करोगे कभी, लाइव तो जाएगा यस ना सर एप्लीकेशन, यस सर तो उसको एडब्ल्यूएस पे डिप्लॉय कर देना। वो ओके डिप्लॉय करने के लिए तो सीखना ही पड़ेगा एडब्ल्यूएस। ओके हो गए दोनों काम। ओके मतलब आज नाउ अगर एडब्ल्यू हाँ, आज अगर यस एडब्ल्यूएस सीखना है तो कैसे सीखोगे? व्हाट इज एडब्ल्यूएस, उसके क्या सर्विसेज हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे सीखोगे, राइट? आप उल्टा यस सीख यस लो कि मुझे ये डिप्लॉय करना है, कहाँ डिप्लॉय करूं? अरे वो डब्बे को क्या बोलते हैं एडब्ल्यूएस में? EC2 बोलते हैं। अच्छा, बनता कैसे है? अच्छा, उसका नेटवर्किंग कैसे होता है? वैसे सीख लो, वो ज्यादा बढ़िया तरीका है सीखने का, ओके दैट्स ग्रेट यस सर है ना? सिंपल है। अभी यस फोकस ऑन योर प्रोजेक्ट, कॉलेज पे फोकस करो। उस प्रोजेक्ट के थ्रू जो जो जरूरत पड़ेगी वो सीखते जाना, अपने आप हो जाएगा, आपके दोनों काम हो जाएंगे। yes sir is it good to so go with vibe coding that taking help of perplexity chat gpt इट इज गुड एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड व्हाट द हेल इट इज डूइंग, yes sir बिकॉज वो 1000 लाइन का कोड दे देगा, आपको समझना चाहिए क्या हो रहा है उसमें। वो प्रॉब्लम है सिर्फ, जब तक समझ आ रही है तब तक ठीक है, नहीं तो वो कोड sir फिर चैट जीपीटी का है, आपका थोड़ी है। sir again I use a trick for that हम्म which is sometimes the code doesn't understand me. I can't understand what they tell. How हम्म I want to paste that code in that specific part. Sometimes it comes error. Then to solve हम्म that, they provide a simple that short syntax to solve that. Ki this code come go and paste there. Then again I हम्म don't understand how to paste it, how to paste the which place. When I place हम्म that again I not solved. Then I told that I gave a full code and I ask that prompt that give me a proper full working code with the resolving these issues and error. Then again they give that and again go with that. So see, Tanish, what is happening is you are building an application that you don't understand, which is a Okay. problem, right? Okay. Yes. Your Yeah. AI Yeah. understands, you don't understand that Yes. application. Yes. If I take your interview, I will reject you in under 5 minutes Okay. because you have no clue what decision has been taken, what functions are there, why those functions are created, how they are written, how is the logic used. You don't understand any of it. No, sir. I Hmm. provide the design. I provide the logic and how they work. I give the whole design to that AI.
Then why are you what I not want, writing the how. code? Why are you not writing the code then? So to write the code, I think I want to learn the specific language or set of Node.js, तो वो तो HTML, सीखना ही JS. पड़ेगा ना भाई, वो तो सीखना ही Yes, पड़ेगा ना, ये शॉर्टकट नहीं है उसका. okay. This is absolutely the wrong way of doing it. And Yes, what sir. design can you create if you don't know how the code works or how the code is written? Then how can you Yes. design? What are you talking about? So I'm talking about that virtual idea that in my mind, and I expressed in a prompt to them and arranging them in a manner way. This is a good side project, Yes. right? This is not the right way to build an application which can potentially grow or on the basis of which you can land a job. It will not happen, I can tell you right now. Because all you Okay. have is an idea and a working application. इसके बीच का गैप है ही नहीं, वो नहीं पता आपको, Okay. है ना? Yes. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कोडिंग का, वो तो आप कर ही नहीं रहे हो. Yes. कोड करते टाइम इश्यू आ जाए, उसमें एआई की हेल्प लो, परफेक्टली फाइन. बट कोड लिखा ही नहीं और सारे एआई से बना दिया, तो फिर आपकी क्या जरूरत थी? Yes. ये तरीका गलत हो गया ना, अप्रोच गलत है. Yes, sir. अप्रोच चेंज करो. कोडिंग तो what? सीखनी पड़ेगी. So first I go for Start. to learn coding and then go to accomplish that No, project. I'm saying no. I'm saying in the same project, start to write your code yourself. When you get stuck, take Okay. AI's help. But Okay. make sure you are writing project, not AI. Okay. अभी Okay, उल्टा sir. हो रहा है. ठीक है? Yes. Okay. Thank you, sir. Anji, who's next? Yes, Prathamesh. Sir, it's a very nice to meet you. I had a couple of questions. I can't hear you, Prathamesh. Hello, sir. Am I audible? Yes, now yes. Yeah. So I had some couple of questions I wanted to ask you. First Okay. of all, sir, actually हमें multiple frameworks सीखने चाहिए क्या? जैसे मैंने अभी Node.js मुझे आता है अच्छे से framework. I mean Backend, and then Next.js अच्छे से आता है, Django अच्छे से आता है. So should I switch to Spring Boot, which is in Java? Are you working somewhere? No, sir. Right now, not. I'm just an intern. And what kind of work are you doing in that company? What frameworks are you using there? Yes, sir. I basically use Next.js for making the front end, and the Okay. backend developer has made in Node.js. Excellent. So your question is, should I learn more frameworks or not? Yeah. Sir. Why would you not learn more frameworks? एग्जैक्टली यही मुझे एक डाउट पड़ भी रहा था कि मुझे क्यों नहीं एक्चुअली करना चाहिए. नहीं, मैं तो उल्टा पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं करना चाहिए? हाँ सर, फिर अगर समझो कुछ इंफॉर्मेशन, क्रूशियल इंफॉर्मेशन वगैरह जो हो गई, मैं समझो स्प्रिंग बूट में कर लिया स्विच, 1 साल हो गया और मुझे अभी नेक्स्ट जेस की आदत ही नहीं है फिर तक, और मैं उसका इंटरव्यू देने चला गया, देन व्हाट? तो मत जाओ ना इंटरव्यू देने फिर, या इंटरव्यू से पहले आदत डाल दो. वही ये क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन है? एंड सर, और एक चीज की, अगर मुझे फ्रॉम फुल स्टैक डेवलपर टू अ डेवऑप्स इंजीनियर अगर स्विच करना हो, सो व्हाट स्टेप्स शुड आई टेक? भाई स्विच तो तब करेगा जब बन जाएगा, पहले बन तो जा. अभी तो इंटर्न है ना. हाँ, वो तो ठीक है आपने. तो पहले नौकरी तो ले ले, फिर स्विच करना. एक तरफ आ तो जा पहले. Yes, sir. Your current focus should be in the company where you're interning. They should hire you. Yeah. Yes. That is the only goal that matters. Nothing else matters. Do whatever it takes to get hired in that organization.
That's the only thing that matters. या सर, और लास्ट क्वेश्चन सर कि जैसे तनिष अभी जो आया था वो बोला था कि ही यूज्ड टू वाइट कोड प्रोजेक्ट्स। मैं भी पहले सर सेम ही करता था, बट अभी मैंने हाँ. थोड़ी सी टेक्निक चेंज कर दी है। अभी मैं उसको एजेंट मोड पे ही चलाता हूँ, मैं बस आस्क मोड पे चलाता हूँ, और मोस्ट ऑफ द कोड मैं खुद लिखना चालू कर दिया हूँ, लाइक फ्रंट एंड और एपीआई में मैं खुद ही लिख देता हूँ। बट अगर मुझे कोई Good. चीज समझ में नहीं आती तो मैं उसको आस्क मोड में एआई को पूछ लेता हूँ कि हाँ भाई कि ये कैसे करते हैं। तो एम आई ऑन द राइट पाथ, और कुछ सजेशन Yes. इसके लिए? Yes, that's what I said ना। वो तो खुद कोड लिख ही नहीं रहा ना, वो तो सारा एआई से लिखवा रहा। तो तूने क्या किया? हाँ सर। ये तो कोई भी कर सकता था ना। तो you're हाँ on the सर। right path. That is exactly how you should use AI. ओके, That is correct. या थैंक यू ठीक है? सर, दीज वर माय 3 Okay. क्वेश्चंस। थैंक यू। Thank you. All right. Abhinash, go ahead, please. Hello, sir. Am I Hello. audible? Very much. Sir, am I audible, sir? हाँ. Okay. So अभी You मैंने can't. अप्रैल 2025 में मैंने ग्रेजुएट किया बीटेक से, और Okay. रिएक्ट सीख रहा हूँ अभी। रिसेंटली रिएक्ट सीख रहा हूँ, कुछ बेसिक्स स्टफ सीख लिया है और प्रोजेक्ट्स बनाए हैं अभी। तो अभी मुझे एडवांस्ड रिएक्ट की ओर मूव करनी चाहिए, जैसे कि जो रिडक्स और जो रिएक्ट क्वेरीज टूल किट, ये सब चीज़ जो होता है, इसकी ओर मूव करनी जॉब है चाहिए या आपके बैकएंड पास अभी? सीखनी चाहिए? जॉब है नो आपके सर, पास अभी? नो जॉब, जीरो वर्क एक्सपीरियंस। किस टाइप के इंटरव्यूज आपने लास्ट 1-2 महीने में कोई इंटरव्यू दिया है? नो सर। आपके फ्रेंड्स ने दिया इंटरव्यू? यस, हाँ, उन्होंने तो दिया है इंटरव्यू। उनसे पूछो क्या पूछ रहे हैं इंटरव्यू में। गोल रिएक्ट और उसके आगे पीछे सब पढ़ना नहीं है, गोल नौकरी लेना है ना? यस। तो और जॉब के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ो। आपके फ्रेंड से पूछो कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एंड सी उसमें क्या स्किल गैप है। दैट शुड बी द फोकस। द फोकस इज नॉट टू बिकम अ एक्सपर्ट इन रिएक्ट, द फोकस इज टू क्रैक अ जॉब, and whatever is required, that is what you should learn. What kind of companies are these people able to get interview with? What kind of questions they are asking? Get that list from your friends who have appeared for interviews in the last 2-3 months, and then evaluate yourself against those skills. Then you'll get the answer what you need to learn. ठीक है? ओके सर, और छोटी सी क्वेश्चन है। हाँ. बैकएंड जॉब सीखूं तो कौन सा टेक्नोलॉजी में सीखूं, मतलब ज़्यादा बेटर रहेगा? अभी इंडिया में जॉब्स कौन सा टेक्नोलॉजी में ज़्यादा है अभी, जावास्क्रिप्ट में या जावा करूं, स्प्रिंग में? यार देखो, डिफिकल्ट तो सारे ही हैं। इट डिपेंड्स ऑन आपका बैकग्राउंड क्या है ना? यस सर। तो आज के दिन जॉब मार्केट इज डिफिकल्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. What matters is what you can learn quickly and what in your city, in your college, what kind of questions are people asking. ठीक है? यस। Okay. All right. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। Yeah. Yeah, hello, sir. Hello. Hi, Sandeep. Yeah, hello, sir. Sir, I am following you like since last 6-7 months in YouTube. Like coming to my details, I'm right now working in a MNC L&T Mindtree, and I have been working from last 3.7 years as Okay. cloud engineer. And here my responsibility are managing managing Azure like instances, like virtual machines, and as well as I was working in node level as well as top of the rack level as well as compute cluster level. But here from last 6 months, I have been following you as well as other resources, and I've been preparing for DevOps interview. So I have already attended 3 DevOps interviews, but the where I'm getting stuck is like how I can show my day-to-day responsibility in my work
space as a DevOps work. Like they want someone to be like working in DevOps from last 3 months, from last 3 years, 4 years, whatever maybe. But I'm not able to show them like how I can show my office work or whatever task I'm doing in the office as DevOps work. How I can show that. And what kind of work are you doing? Sorry, can you repeat that one more time? Yeah, I'm working as a cloud engineer. My day-to-day responsibilities are like managing like Azure compute clusters, as well as top of the racks, as well as on the node level. I was working on that to Okay. maintaining And those. are you using any Ansible Terraform for that? Or Not like that. maybe a bicep? Here our client is Microsoft only. So Don't whatever things. don't give all that information here. Don't take company names here. Okay, this public Oh, sorry for information. that. Don't do that. Yeah, sorry for that. Yeah. So are you So using any automation tools? That's what I'm asking. not right now. No. Do you know any of these? Yes, I am preparing for DevOps from last 4 months. Even I do follow your like the thing like learn in public as well. I have been regularly active in LinkedIn. I have been active in Hasnode as well. I am putting blogs every time, twice, thrice a week. But Okay, I'm so getting stuck there. let's say this. So you said you manage Kubernetes clusters, right? Yes, yes. And you also take care of the Azure infrastructure, Yes. right? So can you mold that experience to say that, hey, let's say you use bicep on top of Terraform or even Terraform itself, right? And using that you have created some infrastructure. That's how you can mold. Don't say you did that manually, but use some of the infrastructure as code and configuration management tools to say that you've been managing it. That's one way to do it. Okay. So Okay. see, I got DevOps, it. you can approach Yes, DevOps yes. from an infrastructure standpoint. Okay, because that is the work that you're doing right now, right? So give DevOps an infra spin now. That will work in your case. So another question is, I'm getting that even I tried that in one interview, but it didn't work because I could not explain the interviewer the way I should be explaining. So another thing, sir, is like I have been already studying and learning this DevOps from last 4 months. Nearly, I have completed. Now I'm learning Kubernetes as well. So, so I just want to know like. In a I have already made several projects as well, nearly 6 7 projects, but I have added 3 projects in my resume to show them like already it is there in GitHub as well. But Okay. when I'm trying to show the interviewer like these are the projects that I have done from myself and all, they are not interested to know what kind of projects I made. They just are simply what kind of work I'm doing in my current company. I So in understand. that Yeah. case, how I can do? So you'll have to be honest with them. You have to say that, hey, currently I'm doing this kind of work. However, I'm interested in moving into a DevOps role. And in order to do that, these are the projects that I have built. Because Okay, you it's can't totally say fine. that, yeah? Or Yeah, it is option kya hai, totally yaar? fine if I. Okay. You don't have any other option, right? You can't say that I did this at my workplace because that's not your role. Got it. Right? So hopefully you have to find a good interviewer who will be little sympathetic and some common sense. They will not shoot you. Right? Because there are some notorious people who will say, hey, you don't have work experience, so not valid. Could possible.
but somebody who's a little bit reasonable, who understands that, okay, this guy is trying to make a shift, and because he doesn't have work experience, you've tried on your own. Hopefully you'll be Okay. able to find the right people. That's what it is. Yeah. And as you know already, like every company has 3 months notice period. That is the other problem. Like companies are calling me, like I'm calling, getting call from HRs that they're listening this 3 month notice period, and again they're like cutting the call. Like Yeah, that no, is it's a very weird problem we have in India, but it is what it is, right? People have figured out various cheeky ways to beat around that. हाँ, तो वो even करना I पड़ेगा, क्या tried. करोगे अभी? It's unfortunate, but it's true. That's how it is. क्या करोगे? There's no way around it, right? You have to be a So little what clever I and was little cheeky thinking, about it. as I was thinking already, I have been learning from last 3 4 months and made several projects and all. It is fine if I resign from the company and if No, I start looking for other job. don't do that, please. Don't do that. Because you have a stable job, it is giving you the money that it is giving you. Why put unnecessary pressure on yourself? There is no guarantee you will get a job, right? You might get it next week, but you might not get it for 3 months. फिर क्या? Right? So don't put unnecessary pressure on you. Resigning is never a good idea without the next job. Never. So continue your job, look for the next one. When you get it, then do it properly. Don't put unnecessary pressure, यार. क्या मतलब है? ठीक है? ठीक है sir. Like, yeah. Okay. Thanks, यार. Okay. Hari, go ahead, please. Sir, may I audible? हाँ, आदर्श. Camera on कर यार. आदर्श. Sorry, Hari. I'll take Adarsh first. हाँ जी. Good evening, sir. Good evening. Sir, I'm Adarsh from West Bengal. Am I audible? Yes, yes. Okay. Sir, मेरा थोड़ा बहुत ही बुरा क्या बोलूँ मैम situation happen. I know, sir. I'm currently in 4th sem. Okay. College में 4th हूँ. sem. Okay. And 4th sem. हाँ. And कॉलेज चलते चलते सर हिट हुआ कि मैंने सर ये 4th sem कुछ पढ़ाई नहीं किया. फुल ऑन गेमिंग, फुल ऑन फ्रेंडशिप वगैरह वगैरह, फुल टाइम वेस्ट. एंड आई एम नॉट फीलिंग कि अब कुछ करना पड़ेगा और नथिंग देयर. एंड आई एम आस्किंग यू सर कि मैंने सर जावा चूज किया. बेसिकली मेरे को पाइथन उतना जेल नहीं हुआ मेरे साथ, सो मैंने अभी जावा चूज किया है. एंड व्हाट इज द बेस्ट वे टू लर्न इट सर? आई एम आस्किंग बिकॉज यूट्यूब में इतना सारा इंफॉर्मेशन है सर. आई एम लिटरली कंफ्यूजिंग कि ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, कोई बोल रहा है चैट जीपीटी करो वगैरह वगैरह. एंड जस्ट ओवरफ्लोइंग इन माय हेड. सो इट्स बैड. आपके दोस्त लोग क्या कर रहे हैं? वो कैसे सीख रहे हैं? कोई तो पढ़ रहा होगा. आई डोंट हैव फ्रेंड्स. मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट पर्सन हूं एंड मेरा ये सच बोलूं तो एक भी दोस्त नहीं है. स्कूल टाइम में भी नहीं था. मैं जाता था, एक बेंच पे बैठता, पूरा क्लास एंड, देन मैं घर आ जाता था. सो दैट्स लाइक पर्सन आई एम. एक ही दोस्त है, वो भी बीबीए डिपार्टमेंट का है. मेरे डिपार्टमेंट का भी नहीं है. सो किसी काम का नहीं है फिर वो भी. हाँ, ऐसा क्यों वो है? भी सेम काम का है. हाँ सर. ऐसा क्यों है सर? उतना जेल नहीं होता सर, बिकॉज मेरे जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं दे आर लाइक लिटिल बिट सेल्फिश. सब लोग अपने अपने काम में मस्त है, मगन है. यू नो लाइक अगर किसी का कुछ फायदा नहीं है देन दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट एंड दे आर इंटरेस्टेड इन थियोरेटिकल अप्रोचेस. मैं अगर उनको बोलूं कि भाई थोड़ा प्रैक्टिकल करना है वगैरह, देन मेरे को सिखा वगैरह, देन दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट. दे आर इंटरेस्टेड इन हाउ देयर अप्रोचेस आवर टीचर्स, आवर यू नो जैसे असाइनमेंट के थोड़े ज्यादा मार्क्स मिल जाए, लाइक दैट्स. सो मेरे को जेल नहीं होता उनसे थोड़ा. सो आदर्श, देखो अनफॉर्चुनेटली लोगों के साथ काम करना सीखना पड़ेगा.
राइट, ये अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है। कंपनी में भी काम करोगे तो यही लोग होंगे, कोई ऐसा अलग से सुपरस्टार नहीं आने वाला आपके साथ, राइट। तो वो एक स्किल सीखनी पड़ेगी। अगर कंपनी में 10 लोग साथ में काम कर रहे हैं तो 5-6 आपको नहीं पसंद होंगे, इट इज ओके। सारे आपकी वेवलेंथ के नहीं मिलेंगे, एक आध दो मिल गए बहुत है। लेकिन जिनसे वेवलेंथ नहीं भी मिलती उनसे थोड़ी बहुत बातचीत तो करनी पड़ेगी ना यार, थोड़ी बहुत दोस्ती तो रखनी पड़ेगी ना, ऑप्शन नहीं है कोई। क्योंकि हाँ सर, अनफॉर्चुनेटली बात वी होता है, हाँ बात नहीं होता है, बट बट उतना क्लोज नहीं। वो थोड़ा वो स्किल भी डेवलप करना पड़ेगा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, राइट। यू हैव स्टिल हैव टाइम, यू आर इन द 4th सेमेस्टर, यू हैव टाइम। सो अलोंग विद टेक्निकल स्किल्स थोड़ा पीपल स्किल पे भी एफर्ट मारो, क्योंकि बट आगे सर जरूरत कैसे, पड़ेगी। मतलब कैसे सीखूं सर? थोड़ी थोड़ी बकचोदी सहन कर लिया करो, कोई बात नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है ना। सुन ले कभी कभी, क्या है, क्या फर्क पड़ता है ना। क्योंकि ऐसे लोग आगे भी मिलेंगे ना। नाउ कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन कि हाउ शुड आई लर्न। सो द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग फॉर यू स्पेसिफिकली इज बाय डूइंग, right? So for example, if you want to learn Java, think Yes. of an application that you want to make. Okay, so let's say you want to make a weather application. Okay. Right? It'll have a simple front end, it'll have a text box, you will give it the name of a city and find weather, वो जाके weather ढूंढ के लेके आएगा। Simple application. ये बनाना है आपको अभी, अब ये जावा में बनाना है। तो पहले तो इसका फ्रंट एंड कैसे बनेगा वो ढूंढो, उसके बाद कहीं से तो वेदर लेके आना पड़ेगा, किसी वेदर एपीआई से लाना पड़ेगा। वो कैसे मांगते हैं, कैसे हैंडशेक होता है, कैसे एपीआई इंटीग्रेशन होता है, फिर उसको ब्राउजर पे कैसे दिखाना है, डिप्लॉय कैसे करना है। सो लर्न थिंग्स फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ डूइंग। दो तरीके पढ़ने के, एक तरीका तो यह जावा की किताब उठा ली और फर्स्ट चैप्टर टू एंड चैप्टर पढ़ लिया, या ट्यूटोरियल ले लिया किसी का और सारा पढ़ लिया, और उसने जो डेमो सिखाया, जो बनाया, वो खुद से कर लिया। एक वो तरीका है, बट वो सर बहुत ही वो ओल्ड स्कूल प्लेलिस्ट तरीका। चलता ही जाता है, वो यू नो वो एग्जैक्टली, चलता ही जाता है। उसमें कुछ सीखते नहीं है उसमें। अब वो रील स्क्रॉलिंग की तरह हो जाता है। करेक्ट, तो कोई पॉइंट नहीं है। तो इससे बेटर है एक एप्लीकेशन सोचो दिमाग में कि अच्छा ये बनाना है। अभी जैसे ये एग्जांपल बनाया मैंने, तो उसका सबसे पहले फ्रंट एंड बनेगा। ओके, फ्रंट एंड के लिए मुझे क्या लगेगा, मुझे एक डब्बा डालना है जिसमें सिटी का नाम आएगा और एक बटन चाहिए, सिंपल। ये कैसे बनाएंगे जावा में, इतना सर्च करो वो बना दो। तो to able to do something you figure out, and then you will know that actually you've covered about 50-60% of what you had to learn. That's the best way for you. Does it make sense? मतलब सर प्रोडक्ट सिलेक्ट करो, देन उसके लिए जो जो चीजें चाहिए लर्न Exactly. उसके लिए लर्न करो। वैसे 4-5 चीजें बना दोगे तो anyway 70-80% कवर हो जाएगा, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू। All right, thank you. थैंक यू सर। Okay, Rishabh, go ahead please. Yeah, hi sir, good evening sir. Good evening. Yes sir. Sir, my question is like I have experience of around 1.5 years, but currently I'm applying to number of jobs like on LinkedIn or Internshala, but I am not getting enough responses. And For in interview. yes, and in Internshala they assign some tasks and I used to complete those tasks within a timeline, but I didn't get hear back from them. And like, and I am also learning in public as well. And sometime like there are online tests in which they are asking DSA. So like recently I worked for a company in the last year. So there is not much practice of DSA. So I am again practicing that also. So
this is this is one reason like I am lacking some DSA experience here. ठीक है. This I know this is one reason for it. And other than that, I have projects and I have a GitHub repo as well, live projects as well. Like what to do now. And my stack is one stack. So you have projects, you're saying you have the skills, you have the projects, Yes, sir. but you're not even getting calls, Yes, sir. right? I have So got whether some you calls, but they didn't work. Like at the and how end, many interviews have you done in the last 1-2 months? I have recently started job searching, like in last month only, and I have got around 3 to 4 interview calls. That's not bad then, yeah. In 1 month, if you've got 4 interview calls, that's not bad at all. So you are Okay. getting the calls. The problem is you're not Yes, sir. clearing the calls, right? That's the Yes, sir. problem. Okay. Yes, sir. So for these last 4 interviews, make a list of questions that you could not answer. Okay. Okay. Then it will tell you what areas you lack and you focus there. Okay. Okay. And Have you other done thing I that? noticed, yes, sir, I have done that, and I am repeatedly doing that also, to improve that, to improve my knowledge on that part also. Okay. Okay. So I'm doing that. And other thing I noticed, like now companies are expecting from one-stack developer to work on AI, like training LLM models or working with LLM, like how to deal with it. Like I don't know Python, and I am like just trying to get into that as well, like starting from learning Python basics and the libraries like pandas, numpy, the things which are required. So I'm also looking to go into that as well. Okay. So how That's to good. approach it? तो अप्रोच कर तो रहे हो अभी, और क्या मतलब ऐसे ही करते हैं और क्या करते हैं, मतलब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है, अब जैसे मन स्टैक से अब एलएलएम की तरफ जा रहा है, तो अभी एलएलएम तो मतलब एक एडवांस टॉपिक कह सकते हैं, और लाइक अभी मैं पाइथन से जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसमें एक ठीक ठाक टाइम भी लग सकता है उस लेवल पे पहुंचने पे, एलएलएम तो ट्रेन लगेगा ना करने भाई, के अभी लिए एक छोटा। नई चीज सीखने में तो लगेगा ना टाइम, उसमें तो कोई शॉर्टकट थोड़ी है यार। और आज यूर राइट, सिर्फ मन स्टैक से नहीं मिल रहा है जॉब। कुछ लोग एलएलएम पूछ रहे हैं, कुछ उसके साथ डेवऑप्स पूछ रहे हैं, कुछ उसके साथ फ्रंट एंड पूछ रहे हैं, कुछ बैक एंड पूछ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, क्योंकि 3 लोग के काम 1 लोग से कराना है। हाँ, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गया है पहले से। है ऐसे ही है अभी, क्योंकि पैसे नहीं है मार्केट में और 3 लोगों का काम 1 आदमी से करना है, तो यही सब होगा। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, करना ही वो पड़ेगा, एक्सेल करना ही पड़ेगा, मल्टीपल डोमेन में करना ही जाना ही पड़ेगा, पड़ेगा वो। कोई ऑप्शन नहीं है। That's how it is. At every level, that's the problem. Even at a fresher with 10 years, 15 years, same problem. 3 आदमी का स्किल 1 बंदे में चाहिए, but that's what it is. क्या करोगे? मार्केट ही वैसा है, करनी पड़ेगी भाई मेहनत, कोई ऑप्शन नहीं है। ओके सर। ठीक है, ओके, ऑलराइट, हरी, गो अहेड प्लीज। Yes. Hello, sir. Hello. Am I audible? Yeah, good. Sir, I'm a final year student. I got a internship through some basic knowledge of DSA and basic knowledge of Munstack. I will join the company from Jan. But sir, the thing is, I have done only 2 projects in Munstack. That too from YouTube video. Means I just copy pasted the code. And when now I want to build the any app from scratch, I lack the syntax and the basic thing how to approach. So I am thinking to buy a course. Is there any guidance you would like to give? तो जॉब कैसे क्रैक किया, नौकरी कैसे मिली? Sir, DSA sir. ओनली डीएसए, वही पूछा। नो सर, ऐसा नहीं है, मतलब मैंने बीच में जैसे थोड़ा बहुत रिएक्ट भी, जैसे मैंने बताया ना आपको कि यूट्यूब वीडियो से किया था रिएक्ट और नोड, मतलब मंच टेक, तो क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे तो
थियोरेटिकल क्वेश्चन के मैं जवाब अच्छे से दे पाता हूँ, तो मैंने वो दे दिए। बट दिक्कत ये है कि जैसे लैपटॉप में बैठ के मैं अगर प्योर स्क्रैच से बनाना चाहूँगा कि हाँ, मुझे ये चीज़ बनाना है, तो मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2 ही प्रोजेक्ट बनाए, वो भी जस्ट कॉपी पेस्ट किया था, जो उन्होंने बताया वो मैंने लिख दिया। हुँ। तो अभी मैं सोच रहा था कि अभी जैसे 3 महीने हैं मेरे पास, तो मैं कोई एक कोर्स खरीद लूँ या क्या करूँ मतलब? हाँ मतलब अगर बिल्कुल ही फाइट है तो कोर्स कर लो, फिर इट्स नॉट अ बैड आइडिया। उसमें सिखा देंगे आपको ओके। ढंग से अच्छा, लेकिन अब कोर्स सर ऐसा करना जिसमें प्रोजेक्ट्स बनवाएं वो लोग, खाली ज्ञान नहीं चाहिए। ओके। सर उनके एनी प्रोजेक्ट्स देख लो कैसे हैं। मतलब नहीं यार मुझे नहीं मतलब पता। सर कोई अच्छा, सर और एक मतलब मुझे जानना था कि जैसे अभी मेरा टारगेट जो था एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, बट मतलब मुझे मिल गया एक सर्विस बेस्ड कंपनी, क्योंकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ, नॉर्मल टियर 3 कॉलेज से। ठीक है। तो अब जैसे इंटर्नशिप चालू होने में टाइम है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो 3 महीने का टाइम है, उसमें मैं डीएसए स्ट्रॉन्ग करूँ कि मन स्ट्रॉन्ग करूँ, कि मुझे आगे चल के अभी प्रोडक्ट बेस्ड क्यों कंपनी डीएसए में स्ट्रॉन्ग जाना करना है? है? अभी तो नौकरी मिल गई ना, अभी क्या करना डीएसए का? फिर हाँ, हो गया काम इंटर्नशिप खत्म। मिली है सर। हाँ। ओ इंटर्नशिप है ये। वो हाँ जी सर, इंटर्नशिप है, वो भी जैन से स्टार्ट होगी। फिर तो दोनों करने पड़ेंगे ना, क्योंकि इंटर्नशिप के बाद भी तो डीएसए लगेगा। हम्म। दोनों करने पड़ेंगे, डीएसए भी करना पड़ेगा और मन भी सीखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ओके। क्योंकि और सर कंपनीज तो मुझे जैसे डीएसए एक पूछेंगी चीज ना। जाननी थी। हाँ हाँ, हम्म। वो तो बिल्कुल आपकी बात सही है। सर जैसे मतलब कोई एक टेक स्टैक हम पकड़ते हैं, मान लो जैसे अगर मुझे नोड जेएस पकड़ना है, तो जैसे कि अभी मैं आपका एक मतलब अभी तो मैं तब से कनेक्टेड हूँ, तो आपने कहा कि जैसे एक आप पहले सोचो कि आपको क्या बिल्ड करना है, फिर आप उस पे बनाओ। तो पर सर हम्म। मैंने ये भी ट्राई किया था, बट दिक्कत ये हुई, जैसे मैंने एक नॉर्मल इंस्टाग्राम जैसा ऐप सोचा था कि ये मैं बनाता हूँ, बट उसमें सर अब ठीक है। दिक्कत ये आ रही है, क्योंकि नोड जेएस मुझे स्क्रैच से ही नहीं पता था। तो मैंने जब खुद से चालू किया, तो मैं 2-3 दिन के बाद ये देख रहा हूँ कि मैं अपने पूरे कोड चैट जीपीटी से ही बनवा रहा था, क्योंकि मैंने तो कभी सीखा ही नहीं था पहले। तो इसमें भी मुझे थोड़ा डाउट था कि आपने कहा मतलब बिल्ड करके बनाओ, तो ये एक दिक्कत आ रही थी सर। तो अभी आप थे क्या? 15-20 मिनट पहले एक और बंदा आया था, सेम प्रॉब्लम। तो कोड आपने नहीं लिखा ना, हेलो। कोड तो चैट जीपीटी ने लिखा ना, तो उसका क्या जी फायदा जी। हुआ? उसका कोई नहीं फायदा सर, नहीं है मैं ना। ये कह रहा था जैसे हेलो। हाँ, तो चैट जीपीटी से हेलो। कोड थोड़ी लिखवाना है, कोड आपको लिखना है, जहां फंस जाओ तब एआई की हेल्प ले लो। अदरवाइज क्या फायदा हुआ? फिर तो आपने थोड़ी सीखा कुछ। जी सर, मैं समझा, बट जी, जी। मैं सर ये कह रहा था, जैसे कोई एक टेक्नोलॉजी मुझे बिल्कुल नहीं पता, जैसे कि नोड जेएस है, और मुझे मतलब जैसे मैं अभी सोच रहा हूँ कोर्स लेने का, या तो फिर मतलब जैसे आपने कहा कि आप पहले एक ऐप सोचो फिर बनाना चालू करो, तो मैंने ये सर किया था। तो उसमें ऐसा दिक्कत ये होगी, क्योंकि मैं बना ही नहीं पहले मैंने सीखा ही नहीं है, तो मैं गूगल कर रहा हूँ, फिर धीरे-धीरे गूगल से थोड़ा बहुत चैट जीपीटी किया मैंने, फिर उसके बाद क्योंकि मुझे आता ही नहीं है, मैंने कभी सीखा ही नहीं है, तो अल्टीमेटली वो फिर हर चीज़ मैं चैट जीपीटी पे ही निर्भर हो जा रहा था। तो सर उससे कैसे ब्रेक ब्रेक करूँ, मतलब कि सीखूँ मैं वो नोड जेएस या रिएक्ट या मोंगो जो भी हाँ, चीज़ है? सीख लेना फिर, मतलब ऑब्वियस है ना। देख यार, जो यूट्यूब पे बोला जाता है ना, राइट, उसमें मुझे आपका बैकग्राउंड नहीं पता है ना, तो जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं उसको थोड़ा अपने कॉन्टेक्स्ट में लेके फिर करो ना। क्योंकि मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं एक यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं जो कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब आपका कॉन्टेक्स्ट और उस वीडियो में कितना डिफरेंस है वो तो आपको समझना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे चलेगा? ओके। तो पहले सीखना ही पड़ेगा ना ऑब्वियसली, नहीं तो फिर आप पूरे ही चैट ओके। जीपीटी पे डिपेंडेंट होगे, उसका क्या फायदा हुआ? है ना। ठीक है। हुँ। ओके थैंक्स। ओके वर्धन, गो अहेड प्लीज, यू बीन वेटिंग फॉर अ व्हाइल यार। यस सर। सर मैं हाँ ऑडिबल? जी, या सर ये सर मैं ये कह रहा था कि मेरा अभी कॉलेज जैसे स्टार्ट हो गया, अब टाइम हो गया 1 मंथ, लाइक 22 डेज। तो सर उसमें अभी एस आई एच आया था, स्मार्ट इंडिया हैकाथन हम लोग के कॉलेज में। हम्म
मतलब जो मतलब नेशन वाइड होता है, तो सर उसमें पार्टिसिपेट किया था मैं, तो आई गॉट सिलेक्टेड, उसमें सफल हो गया सर। लेकिन अब भी दिक्कत आ रही है कि एकेडमिक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो क्या आप उसको ड्रॉप करें या फिर ऐसा ही रहे, क्योंकि हैकाथॉन है तो उससे क्रेडेंशियल मिलते हैं, साथ में इमेज और एक्सपोजर भी मिलता है, तो क्या सर वो सही है या फिर मुझे ड्रॉप कर देना चाहिए एकेडमिक से रिलेटेड? मतलब दोनों दोनों करने वी चाहिए। हैव टू बैलेंस बोथ द वेट्स। यप, अच्छा ओके सर। यू हैव टू। और सर और भी पूछना था, यस सर। सर मुझे ये पूछना था कि अब जैसे मेरा फर्स्ट सेम स्टार्ट होने वाला है, फ्रॉम मतलब स्टार्ट हो गया सेकेंड सेम, मतलब चलने वाले से 2 सेम्स, तो सर उसमें मैंने एआई ऑटोमेशन में मैंने स्क्रैच से करा, क्योंकि पहले मैं मन स्टैक मैंने करा था, तो उसके बाद सर एआई में थोड़ा बूम मतलब बूम आया, तो मैंने उसमें जंप किया, तो देन आई फाउंड दैट एनेटन ऑटोमेशन वर्कफ्लो जैसे सर जो होता है जो ऑटोमेटिक वर्कफ्लो, सर उसमें मतलब जो कलीग्स मतलब जो क्लासमेट्स हैं वो उस पर वर्क पहले कर रहे हैं, एनेटन एलएलएम और न्यूरल दैट इज न्यूरल नेटवर्क प्रोग्रामिंग। तो सर वी हैव क्रिएटेड मतलब आर यू कैन से बूटस्ट्रैप कम्युनिटी, देयर आर 3 पीपल। तो सर हम लोग ओके। जैसे प्रोजेक्ट पे सोच रहे हैं कि जैसे कि हम लोग का एसआईएच में एक प्रोग्राम था रूरल डेवलपमेंट में, कि उसमें वहाँ के जो सिस्टम्स होते थे उसमें बैंडविड्थ कम आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे टावर्स नहीं होते तो उसमें कनेक्टिविटी इशू आता है। तो देन उसमें सर हमने कुछ इंटीग्रेशन करी वेब आरटीसी को, उसमें इंटीग्रेशन करी लो लेटेंसी हाई लेटेंसी इन सब में। सर उससे हम लोग को आइडिया आया कि मतलब प्रोजेक्ट जनरेट करना चाहिए, जैसे कि जो एजुकेशन से क्वेश्चन रिलेटेड हो, क्या है जैसे कि वर्धन, उसमें क्वेश्चन क्या है? कनेक्टिविटी। सर क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन हाउ टू इम्प्लीमेंट और बिल्ड अ प्रोजेक्ट दैट कैन रेस टू वर्ल्ड वाइड एंड कैन बी बिकम अ स्टार्टअप ऑल्सो, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त हैं उनको स्पार्क के स्टार्टअप करना है, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजीज भी आती हैं, मुझे फ्रंट एंड आता है और साथ में ऑटोमेशन इन तो जो आइडिया पसंद आए जो करके ऑटोमेशन देखो, और वर्कफ्लो क्या होता है वो। इसका, जो आइडिया पसंद आए और जो आपको लगता है कि यस वो बेनिफिशियल होगा उसको इम्प्लीमेट करो और देखो क्या होता है। सर लाइक मतलब कि ऐसा तीन सर मतलब 3 लोग हैं, एक फाइनेंस जैसे एमबी का है और एक बीटेक, दोनों बीटेक के, उसने एआई ब्रांच है, मेरी मतलब सीएससी कोर थी सर, वो एआई ऑटोमेशन और वो सब हैंडल करता है, और मैं फ्रंट एंड ठीक है। प्लस यूआईएक्स एंड देन उसमें जो बैक एंड आता है वो भी डेवलप तो कर लेता हूँ। तो सर फर्स्ट सेम में मैं दोनों मैनेज करूँ तो वो ज़्यादा सर है, या फिर एक ड्रॉप मत अकेडमिक्स को तो ड्रॉप कर नहीं सकते, तो क्या ऐसा इसको ड्रॉप करना चाहिए या उसको पैरेलल वो चलता रहे? तो एकेडमिक्स है, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन है और स्टार्टअप है, 3 चीजें हैं, यस सर। है ना? यस सर। अब 3 में से 2 यस सर। करनी है। यस क्या सर। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? So I think that we should join the SIH, मतलब क्योंकि उसमें सफल तो हो गए हैं, तो उसमें शायद प्रोसीड करें, लेकिन उससे एकेडमिक्स हॉल्ट ना हो जाए, या क्योंकि फर्स्ट सेम में तो टीचर्स के सामने बैड इंप्रेशन हो जाता है कि मतलब शायद पढ़ते नहीं, तो उस कंटेक्स्ट में मुझे पूछ रहा देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, एकेडमिक्स तो छोड़ नहीं सकते, था। यस राइट? सर। अब यस सर। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन करना है या अपना स्टार्टअप करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। आपको कितना यस कॉन्फिडेंस है सर। कि स्टार्टअप से कुछ हो जाएगा तो वो कर लो। अगर डाउट है, थोड़ा यस सेफ सर। खेलना है, तो एसआईएच ले लो, इसको 6 महीने बाद कर लेना, ये तो कहीं नहीं जाने जी। वाला। यस सर। आइडिया तो आपके पास ही है, नो सर। 6 महीने यस सर। बाद कर लेना, एसआईएच चला जाएगा लेकिन, तो उस पर फोकस कर लो अभी। ठीक है। यस सर। सर क्या यस सर सर एकेडमिक्स में हम लोग बता रहे थे मिड सेम इन सब में क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, तो क्या एकेडमिक्स में थोड़ा कम करके एसआईएच पे ज़्यादा फोकस कर लूँ क्या, क्योंकि सर 3 to 4 months स्ट्रेच हो जाएगा फॉर फाइनल्स एंड द ग्लोबल दो इंडियन में नेशनल वाइड जो उसमें होता है कि आखिरी तक फाइनलिस्ट में जो पोजीशंस होती है यार उसमें पहुंचने के सीजीपीए इफेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर कैंपस में इंटरव्यू लिए। नहीं यस होगा ना, तो वो देख लो यस बस। सर। यस सर। बाकी एक आध थोड़ा ऊपर नीचे हो ओके गया तो सर। क्या फर्क पड़ता है, ओवरऑल सीजीपीए इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। थोड़े बहुत नंबर कम आ गए यस तो सर। चल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है ना? यस सर। सर एआई सर ठीक। जैसे मैं एआई ऑटोमेशन जैसे कर रहा हूँ एन का। हेलो। हम्म। और सर उसके साथ में लो लैंग्वेज मॉडल्स और हाई लैंग्वेज मॉडल्स जैसे सब जितने एआई में होते, तो वो आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे फ्रेंड को मतलब आइडिया, तो सर वो उसके साथ से इंटीग्रेट करते हैं बातचीत, तो वो कनेक्ट नहीं हो पाता है कि वो मतलब क्या होता है, बैक एंड फ्रंट एंड तो कर लेता हूँ मैं, लेकिन वो कनेक्शन नहीं बिल्ड हो पाता है। अब उसका मैं क्या जवाब दूं यार ऐसे लाइव स्ट्रीम पे मुझे क्या पता, अभी देखना पड़ेगा ना भाई, ऐसे थोड़ी समझ आएगा क्या कर रहे हो अभी। यस सर।
ठीक है सर उसमें मतलब ओके थैंक N8 यस सर। ठीक है थैंक्स यार ओके हाय गौरव Hello. हाँ जी Is it बोलिए audible? या Yes, sir. हाँ, मैंने फाइल को सबमिट किया है, आपको दिख रहा है? क्या किया कोई ऐसा फाइल आपको दिख रहा है मेरे साथ? फाइल नहीं नहीं दिखता होगा, अपलोड किया था मैंने। कहाँ अपलोड किया अरे ओ हाँ हाँ इधर हाँ अभी दिखा अच्छा दिखा क्या? ऐसे ही ये रिज्यूमे बस ऐसे रिव्यू नहीं नहीं रेफरेंस के लिए। मैं करंटली अभी 5th सेमेस्टर में हूँ, 5th हाँ। हाँ तो करंटली 5th सेमेस्टर में हूँ और हम्म एज एन आईटी सपोर्ट इंजीनियर काम भी कर रहा हूँ अराउंड 1 ईयर से हम्म अप्रोक्सीमेट। ओके मैं हम लोग थोड़ा बहुत पहले बात किए थे। तो करंटली क्योंकि हाँ हाँ बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है इसमें, मतलब कुछ ज़्यादा काम नहीं होता सपोर्ट टीम में, ट्रबल हाँ शूटिंग काइंड ऑफ थिंग और करके हो जाता है, तो टाइम बहुत मिलता है। और कंपेयर टू कॉलेज, कॉलेज कभी नहीं जाना पड़ता। मेरा 4 to 5 आवर्स बचता है सीधा सीधा। तो उसमें मैं क्लाउड और ठीक है डेवॉप्स पढ़ता हूँ, जो कि क्लाउड और डेवॉप्स भी कंप्लीट हो गया मेरा पढ़ के। मीन्स कुबरनेटिव मॉनिटरिंग के लिए ग्राफाना, एंसिबल, टेराफॉर्म। टेराफॉर्म थोड़ा कम, मतलब कि फिर भी लेकिन आता है। टेराफॉर्म और एंसिबल वो दोनों भी आता है। तो ठीक है माय क्वेश्चन इज अभी जो मैं करंट इंटर्नशिप कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि हम्म कुछ नहीं करना पड़ता और टाइम बहुत मिलता है पढ़ने के लिए। तो अभी मैं एआई ऑप्स की तरफ थोड़ा और पढ़ूं, या फिर और प्रोजेक्ट भी मेरे बहुत अच्छे हैं डेवऑप्स पे, मतलब ये रेज्यूमे में कम है। बाकी अभी एक हैकाथॉन होगा, शुभम करके कोई है, वो हैकाथॉन ले रहा है, उसमें भी अराउंड फर्स्ट प्राइज ही आएगा मेरा। अच्छा है, ओके मैं डेवऑप्स पढ़ने में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया और बहुत स्पेंड किया है टाइम और बहुत मेहनत की है। तो डेवऑप्स का स्किल सेट मुझको मेरे हिसाब से लगता है कि अच्छा है एज एन फ्रेशर। हम्म तो ठीक अभी है मैं डेवऑप्स के लिए इंटर्नशिप ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि थोड़े बहुत तो ऑफर मिल ही जाते हैं, हम्म या फिर मैं इसी में सपोर्ट में कंटिन्यू करूँ और एआई ऑप्स थोड़ा थोड़ा ट्राई कर लूँ। और इंटर्नशिप एक और लो इंटर्नशिप एक लो और और डेवऑप्स और रिलेटेड। पढ़ाई करके फायदा नहीं है काम करो अभी हाँ, क्योंकि जितने भी टूल्स जो पॉसिबल था, आर्गो सीडी, गिटऑप्स, जो भी मुझको दिखा, मैंने सब बहुत अच्छा किया था। और माय ओ, सेकंड क्वेश्चन, पर वो बोल रहे हैं कि 5th सेमेस्टर है, कम से कम 6th में तो आओ। वो बोल रहे हैं अभी आप बहुत बच्चे हो। उनको बोलो मुझे और आता है तो क्या फर्क पड़ता है इसमें क्या है और ये रेज्यूमे कैसा लगा आपको? मैंने देखा नहीं थोड़ा सा रिज्यूमे थोड़ा रिव्यू सा अलग करेंगे अच्छा ओके। उसमें करेंगे और ठीक है सी आपको और आता है या नहीं आता आपको आपको लगता है आपको आता है वो तब पता चलेगा जब काम करना शुरू करोगे हाँ यही, है ना इसलिए क्योंकि मैंने बोला कि इंटर्नशिप क्रैक करो हाँ, क्योंकि दैट पर्टिकुलर इज क्या व्हाट है, अभी मैटर प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी गिटहब का मैं रेपोजिटरी ले लिया, जो कि टॉप रेपोजिटरी है। अब मैंने उसको ले लिया और जो मुझको पता है कि पहले मैं डॉकर फाइल बनाऊंगा, डॉकर इमेज बनाऊंगा, डॉकर हब पे पुश करूंगा, जेंकिंस के लिए सीआईसीडी पाइपलाइंस बनाऊंगा, अगर माइक्रो सर्विसेज है तो माइक्रो सर्विसेज के हिसाब से अलग अलग सर्विसेज बनाऊंगा, शेयर्ड लाइब्रेरीज यूज करूंगा, मॉनिटरिंग करूंगा हाँ उसको। और अगर अच्छा हो गया तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज एन कोड बना के मैं वापस से रिबिल्ड करके इंफ्रास्ट्रक्चर कोड की मदद से बनाऊंगा। तो ये सब प्रैक्टिस के लिए मैं कोई भी रैंडम सा प्रोजेक्ट को स्क्रैच से लेके यहाँ तक कर सकता हूँ, कोई भी ठीक रैंडम है प्रोजेक्ट को। बढ़िया गुड और गुड इंटर्नशिप क्रैक करो और दैट्स व्हाट मैटर्स देन सेकंड क्वेश्चन, एक ठीक क्या है हो रहा था कि मैंने वेबसाइट में ये कर लिया था, लेकिन एप्लीकेशन में मैं करने गया कि कोई पर्टिकुलर ऐप चले तो वो मुझको मिल ही नहीं रहा है, और मतलब वो हो ही नहीं पा रहा है। ऐप का क्या होता होगा अगर आपको आइडिया होगा तो? जैसे मतलब एप्लीकेशन का ये वाला एप्लीकेशंस जो होते हैं विंडोज पे जो चलते हैं, मैक पे जो चलता है, हाँ और या फिर फोन पे हाँ जो चलता है, तो उनका मैं थोड़े टाइम से देख रहा हूँ कि उनमें क्या प्रोसेस होते हैं, तो वो बहुत दिक्कत आ रहा है उसमें। तो अगर आप मोबाइल ऐप की बात कर रहे हो तो इट कैन बी एन iOS और एन एंड्रॉयड नेटिव ऐप हाँ वो एक्सकोड से बिल्ड होता है एक्सकोड कमांड लाइन से बिल्ड होता है इसमें मैक में हाँ हाँ, तो या फिर उसका जो हाइब्रिड भी हो सकता है जैमरिन जैमरिन से जो उसका प्रोसेस होता है बनाने का, वो ऐसे ही होता है कि डॉकर फाइल बनाते हैं, फिर कुबर के नहीं डैश नहीं 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 उसमें कुबरनेटिस। डॉकर नहीं है उसमें हाँ डॉकर नहीं है ये नहीं पता था मुझको। उसमें आप ऐसे कीवर्ड्स
कीवर्ड्स बता सकते हो क्या, जिससे मैं रिसर्च कर लूं कुछ कुछ? क्या पता करना है? कि प्रोसेस क्या होता है, जैसे मोबाइल ऐप वेब कैसे बनते हैं? नहीं, मोबाइल ऐप का जैसे वेब ऐप का ये प्रोसेस होता है कि पहले हम लोग इमेजेस बनाएंगे, डॉकर इमेजेस या कंटेनर्स बनाएंगे कंटेनराइजेशन के लिए डॉकर, तो ये वाला प्रोसेस। कंटेनर के बाहर भी दुनिया है। हाँ। हर चीज में डॉकर नहीं घुसाने की जरूरत होती है ना। डॉकर सिर्फ 10% दुनिया में यूज होता है, अभी भी नहीं यूज हो रहा है। तो डॉकर क्या बाहर भी दुनिया, वो भी देख ले पहले। तो लेट्स टॉक अबाउट मोबाइल ऐप फर्स्ट। तो अगर iOS का ऐप है तो वो एक्स कोड में बिल्ड होता है। एक्स कोड उसका आईडी है। जैसे एक्लिप्स है ना, वैसे एक्स कोड है। ठीक है, एक्स कोड iOS का नेटिव ऐप बनाएगा, वैसे ही एंड्रॉइड स्टूडियो है जो एंड्रॉइड ऐप बनाएगा। या फिर लोग Xamarin यूज करते हैं जो कि दोनों प्लेटफॉर्म पे चलता है। उसके बाद का प्रोडक्शन तक का क्या वो सिस्टम रहता है? उसके बाद क्या वो होता है? ढूंढ लेना अभी एक्स कोड पे iOS ऐप कैसे प्रोडक्शन में जाता है, गूगल सर्च मार, मिल जाएगा। हाँ हाँ, डन, श्योर, थैंक यू। ठीक है, और आप बहुत मींस आप ऐसे, एक और दूसरा डाउट था कि पर्टिकुलरली बस हर बस सेक्रेटरी अभी हो गया। अभी आप लोगों से बात करनी है अभी नहीं, अगली बार करते हैं। डन। थैंक्स। ओके, विकास भाई कैमरे पे आ जा। या हेलो सर, एम ऑडिबल? हाँ हाँ। ओके सर, तो मैं पहले थोड़ा बेसिक कॉन्टेक्स्ट दे दूँ ताकि मैं क्वेश्चन फिर ठीक से समझा पाऊँ। सो मैं 22-23 में मैंने लाइक रिएक्ट वगैरह पे काम किया था एंड एक फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स किए थे लाइक साइड बाय साइड इन अ कॉलेज टाइम। एंड देन एक लोकल एजेंसी में ज्वाइन किया था और वहाँ पे फ्रीलांसिंग बेसिस पे मैंने काम किए थे। वो 1 साल तक किया और मुझे ऑन कैंपस फिर कैपजेमिनी का ऑफर आ गया था, तो वो मैंने ज्वाइन कर लिया। उसमें मुझे फिर वापस जावा पे स्विच कर दिया गया, जावा में ट्रेनिंग वगैरह हुई, सब हुआ और फिर मैं एक अकाउंट में अटैच हो गया। बेंच के बाद 2 महीने बेंच पीरियड था, अटैच हो गया। अब 9 महीने मैंने उस पे काम किया इन अ माइग्रेशन टीम, लाइक दे वर माइग्रेटिंग टू AWS. So that is done, the migration is done. So now they have shifted me to the non-billable shadow one, and now they are telling me to like there are testing opportunities fully like dedicated to testing. So now you should take that testing opportunity. So अब मैंने क्योंकि उनको बोल दिया कि अब डेवलपमेंट में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है तो मुझे उसी में आगे करना है काम, तो फिर वो बार बार यही बोल रहे हैं कि अभी मार्केट सिचुएशन अच्छा नहीं है, तो जो भी मिल रहा है वो ले लो। और उनमें उन्होंने ये कंडीशन रखी है टेस्टिंग में कि ये एटलीस्ट 1.5 साल तो ये प्रोजेक्ट चलेगा। तो क्योंकि ये जो अकाउंट्स की पॉलिसी है ये 1.8 ईयर्स की होती है, तो जैसे कि ज्वाइन हो गए तो हम सामने से नहीं छोड़ सकते वो अकाउंट, तो दूसरे डेवलपमेंट रोल में जा नहीं सकते। तो इस केस में मैं क्या करूँ, लाइक अब वो टेस्टिंग रोल लूँ या नहीं लूँ मैं, या फिर थोड़ा और वेट करूँ कि एक आध कोई जैसे कि वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि जेन AI बेस्ड कोई अकाउंट में काम आ जाए, तो उन्होंने ये भी बोला है कि इस पे कुछ ना कुछ रिसर्च या कुछ POV बनाते रहो, लेकिन वो ये भी बोल रहे हैं कि टेस्टिंग वाला अपॉर्चुनिटी है तो वो भी ले लो। तो इस केस में लाइक क्या किया जाए? इट्स अ गुड क्वेश्चन। और बेंच पॉलिसी क्या है, कितनी देर रह सकते हो बेंच पे? वेल मैंने वो उसके लिए मैं मेरे टीम लीड से बात की थी कि क्या सिचुएशन है कि हमको निकाल ही देंगे, तो उन्होंने बोला कि ऐसा ना हो ना। जो एक्सपीरियंस पर्सन है उनको तो जल्दी निकाल देते बेंच वगैरह पे, क्योंकि हम अभी तक एज अ फ्रेशर ही कंसिडर हो रहे हैं, सैलरी लो है, तो हमको लाइक 6 महीने भी बिठा के रख सकते हैं वो लोग। अच्छा, पॉसिबल है? या ओके। और अगर 1-1.5 महीना डिले किया तो ये टेस्टिंग वाला चला जाएगा क्या अपॉर्चुनिटी? अगर 1-1.5 महीना डिले किया तो मैं उस अकाउंट से रिलीज होके CG के बेंच पे आ जाऊंगा, कैपजेमिनी के बेंच पे। नहीं नाम उस मतलब अकाउंट से रिलीज हो जाऊँ। ओके, सो कंपनी के बेंच पे आ जाऊंगा। फिर कहीं भी जा सकते हो, पता नहीं, फिर निकल भी सकते हैं, दूसरा अकाउंट भी मिल सकता है, या फिर डेंजरस है, 7-8 महीने बेंच भी हो सकता है। फिर डेंजरस है मतलब काम। लेकिन ऐसे भी लोग देखे मैंने जो 9-9 महीने से बेंच पे बैठे हुए। हाँ, लेकिन वो अचीवमेंट नहीं है ना कोई, उसमें क्या फायदा? नहीं, फिर उस टाइम पे लाइक प्रिपेयर करके स्विच वगैरह की, लाइक ये डिफरेंट सिनेरियोस चल रहे, तो इसलिए कोई कंक्लूजन नहीं। सी बॉटम लाइन ये है कि कंपनी से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दूसरा जॉब मिलना मुश्किल है। दूसरा नहीं है।
हाँ, तो आज तो नहीं है ना, आज नहीं है। राइट? तो बाहर नहीं जाना चाहिए कंपनी से, राइट? नाउ द कॉल दैट यू हैव टू टेक इज कि अगर मैंने 1 महीना नहीं किया ये टेस्टिंग वाला, तो उसमें क्या चांसेस हैं कुछ और आने के जो इससे बेटर हो? आना तो होगा तो अकाउंट में ही आएगा, और उसके लिए भी जो मेरे मैनेजर है उन्होंने बोला था कि एटलीस्ट न्यू प्रोजेक्ट आने में उनका जो ईयर स्टार्टिंग होता है तब आते हैं वो प्रोजेक्ट, ऐसे स्टार्टिंग साइकिल में तो प्रोजेक्ट नहीं आते न्यू, नहीं आते, ठीक है। तो वो दिसंबर जनवरी उस टाइम तक आएगा। तो अभी टाइम है, अभी टाइम है, एटलीस्ट तो 3-4 उतनी महीने देर तो रुक है। नहीं सकते यहाँ पे, उतनी देर रुक नहीं सकते। अब वो उनका बोल नहीं सकते क्योंकि हम जावा रिसोर्स पे, तो जावा रिसोर्सेस को वो जल्दी से निकालते नहीं क्योंकि उन पे वो ज्यादा बिलेबल चार्ज करते क्लाइंट को। नो नो, आई एग्री, लेकिन जैन दिसंबर में भी टाइम है ना, अभी तो सितंबर ही चल रहा है, यस 3 या महीने तो हैं, तो 3 महीने डाइसी है, और कोई गारंटी थोड़ी है कि दिसंबर में आ जाएगा। वो एक आध महीना पहले भी आ सकता है, बाद आगे में भी आ पीछे भी सकता है बाद में भी आ सकता है ना? विच मीन्स आपके पास सेकंड शॉट है नहीं, कोई ऑप्शन है नहीं। एक ही ऑप्शन है, या तो बाहर ट्राई करके 1 महीने में कुछ क्रैक कर लो, है। नहीं तो टेस्टिंग वाला शांति से कर लो स्टार्ट। इससे अच्छा, रिलेटेड उसमें सेकंड भी क्वेश्चन है। या नहीं, ओके उसमें गो भी मैनुअल टेस्टिंग है, ऑटोमेशन है, क्या है? मैनुअल, फुल्ली मैनुअल। ये प्रॉब्लम है, इसलिए दैट इज द ये सिचुएशन। लाइक ऑटोमेशन हो तो कुछ सीखने को भी मिलेगा कि लाइक हाउ स्क्रिप्टिंग हाँ, वर्क्स एंड समथिंग न्यू रिलेटेड टू ऑटोमेशन एंड लाइक एआई से कैसे कनेक्ट करेंगे, लेकिन ये प्योरली मैनुअल है। फिर तो स्थिति गंभीर है मेरे दोस्त। फिर स्थिति गंभीर है। दैट इज द सिचुएशन। लाइक रोज मैं ऑफिस जाता हूँ, यही सोचता हूँ, वापस घर आ जाता हूँ। अब उसकी वजह से मैं कुछ और फोकस भी नहीं कर रहा हूँ। फिर लाइक एक उसी काम कर, मैं तेरे को बोलता हूँ, नहीं, I'll give you an idea. Take this manual testing thing. ओके Why? I'll tell you. You cover your baseline. सैलरी आएगी, हाँ, और इसमें मैं बिलेबल ठीक हो है, जाऊंगा फर्स्ट मंथ से। बिलेबल हो जाएगा, टेंशन खत्म लाइफ की, ठीक है। होपफुली इसमें काम ज्यादा नहीं होगा, पता नहीं है, मैनुअल टेस्टिंग है तो 18 घंटे टेस्टिंग भी करा सकते हैं पकड़ के, कोई भरोसा नहीं है। जिस मैनेजर का आया था मुझे रेफरेंस, तो मैंने उनके टीम मेंबर से बात की, उनसे लाइक हाँ, कांटेक्ट निकला के, तो उन्होंने बोला कि वो मैनेजर लाइक बहुत ज्यादा खड़ूस है। वो 1 मिनट भी आपको अवे दिखेगा तो वो वापस कुछ ना कुछ उंगली करेगा। इन से जैसे मेरा अभी करंट जो लीड था वो बहुत चिल था, उसको बस मतलब काम से मतलब था, काम हो एक गया जगह तो खड्डा, एक आप जगह खाई कहीं भी लेके घूमिए। बैठा हुआ है। लाइक जो अभी मेरा करंट माइग्रेशन में जो लीड था वो बहुत अच्छा था, उसको बस हाँ, काम से मतलब था, काम हो गया आप पूरा दिन कहीं भी जाओ फिर। ठीक है, फेयर इनफ। पर ये बंदा और वैसा अभी नहीं जो है, अगला नया, वाला। ये वाला ऐसा नहीं है। लाइक मुझे लगा एक के साथ एक्सपीरियंस होगा, तो मैंने 2-3 लोगों से पूछा, सबका सेम ही हाँ, ओपिनियन था। मतलब वहां चले गए तो वो चैन नहीं लेने देगा, उसके बाद फिर चैन नहीं कुछ लेने करने नहीं देगा, देगा। और जिस हिसाब से सैलरी है उस हिसाब से ये काम मुझे जस्टिफाई तो नहीं लग रहा। जितना ये लोग वो दे रहे अलग हैं बात है, वो उससे अलग ज्यादा ही बात ये है, लोग। दैट्स नॉट इट, हाँ, दैट्स ओके। और आपने जो अभी स्विच का बोला तो उसके लिए मैंने नौकरी पे ये सब कर लिया। 2-3 रेफरेंस भी है क्योंकि जावा डेवलपर डाला हुआ है, माइग्रेशन डाला है, 2-3 कॉल भी आए। जैसे मैं बोलता हूँ नोटिस पीरियड 90 डेज, ओके बाय। वो तो अलग प्रॉब्लम है, वो अलग तरीके से सॉल्व हो सकती है, लेकिन आपकी सिचुएशन डिफिकल्ट है। बट द ओनली श्योरिटी इज के टेस्टिंग वाला लेके यू कैन प्रोटेक्ट योर जॉब, दैट्स द ओनली फॉर श्योर एटलीस्ट शॉर्ट अ थिंग, ईयर, फॉर एटलीस्ट अ ईयर। फॉर एटलीस्ट एन ईयर, करेक्ट? सो दैट्स द श्योर शॉर्ट थिंग। what you'll have to figure out is वो लेने के बाद how do you still keep yourself upskilled and find the next one, whether within the company or outside. So that's going to विद be इन द tough. कंपनी फिर वो 1.8 के पहले मैं छोड़ नहीं सकता, दूसरे अकाउंट में जा ही नहीं सकता मैं। अगर वो सामने से निकाल दे तो अलग चीज है, अकाउंट में से, लेकिन मैं नहीं निकल सकता। फिर टफ है यार, इट्स अ वेरी टफ डिसीजन, बिकॉज यहां अगर 1.8 2 साल फंस गए तो ऐसा ना हो कि जो आता वो भी भूल जाओ। वो भी भूल जाओ।
क्योंकि मैं जब रिएक्ट कर रहा था, अब मैंने जावा में स्विच कर लिया लाइक डेडिकेटेडली। अब मैं रिएक्ट भूल चुका हूँ, लाइक थोड़ा बहुत याद है लेकिन ऐसे भूल जाता हूँ मैं। और अब मैं लिंक्डइन पे मुझे अपॉर्चुनिटीज आते हैं जो कि ऐसे बाहर से रिमोट जॉब्स है, जो स्टार्टअप्स है या फ्रीलांसिंग के। अब वो मुझे बोलते हैं कि वेब3 सीख के आओ, क्योंकि मैंने कॉलेज में कोई ब्लॉकचेन पे प्रोजेक्ट बनाया था और उसका रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश किया था, तो उसके थ्रू वो लोग मुझे रिडायरेक्ट कर रहे और अब बोल रहे वेब सीख के आओ, पूरा इथेरियम वगैरह सीख के आओ, ether.js, एक्सप्रेस। अब इसका मुझे कॉन्ट्रैक्ट बना के दो। वो सब नहीं पता। अब मैं फिर क्या क्या सीखूं, क्योंकि मैंने अब ये डिसीजन लिया था कि अब मैं जावा सीख रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाए तो मैं डेवऑप्स साइड में शिफ्ट हो जाऊंगा, क्योंकि माइग्रेशन में थोड़ा एक्सपोजर मिल गया था। तो मैं सोचा कि फिर इसमें एक अच्छा फ्यूचर है और ये लाइक लॉन्ग टर्म में प्रोटेक्टेड भी है। एआई वगैरह कुछ भी आएगा तो इसमें तो रिक्वायरमेंट कम नहीं होगी, भले किसी में भी देखो, हो जाए, आपको एक इसमें थोड़े चांसेस कम। कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा आपको, राइट? आपके करंट मैनेजर से पूछना पड़ेगा कि देखो ये सिचुएशन है, मैं फंस गया हूँ अब। नो, थोड़ा मैनेजर सा इज लाइक ऑनेस्टली बात। मार्केट इज वेरी टफ। उनसे मैंने बात कर ली थी अभी फ्राइडे को ही, वो इसी क्या बोलते रिलेटेड। हैं? वो सही बोल रहा है, तो मार्केट वो इज तो टफ, बोला दैट इज राइट। मार्केट इज टफ और अभी बिलेबल मिल रहा है प्रोजेक्ट तो ले लो। और ऐसा नहीं है कि आपको वापस डेवलपमेंट नहीं मिलेगा, लाइक आपको फिर क्लाइंट को वापस प्रूव करवे कि आपको डेवलपमेंट आता है, आपको उनसे वो रिकॉग्निशन लेना पड़ेगा वापस से। वो तो बात सही है, करेक्ट। देखो, इट्स योर रिस्क एपेटाइट, राइट? अगर बहुत ही सेफ खेलना है तो ये वाला ऑप्शन ले लो, टेस्टिंग वाला, और देखो क्या होता है। अगर थोड़ा पंगा लेना है तो कंपनी के बेंच पे आ जाओ और देखो क्या होता है। मैं एक्चुअली वो वाला ही सोच रहा था, क्योंकि मैंने देखा कि 6-7 महीने से भी लोग बेचे और मैंने जितना ऑब्जर्व देखो, किया जावा वाले बेंच पे जो डोंट लुक एट दैट, डोंट लुक एट दैट, यू नेवर नो, इट्स डाइसी, यू नेवर नो, राइट? वो स्टैटिस्टिक्स है। अभी वो बोलते हैं ना, किस्मत रहेगी गांडू तो क्या करेगा पांडू, वो वाला हिसाब है। है ना? तो थोड़ा ध्यान से, आई वुड से, एक तरफ खड्डा है, एक तरफ खाई है, मौका डिफिकल्ट है, लेकिन अगर सेफ खेलना है, मार्केट ऐसी है, तो उठा लो टेस्टिंग वाला काम, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और उसके साथ साथ और देखो क्या कर सकते हो, दैट्स द सेफेस्ट थिंग टू डू। और लाइक इसलिए मैं स्विच करने का सोच रहा था, क्योंकि लाइक एक तो हमारा पॉलिसी, कंपनी का पॉलिसी ये है कि एटलीस्ट 1.8 ईयर्स नहीं होते तब तक आपका अप्रेजल भी नहीं होगा। अप्रेजल का मीट जिस दिन होगा उस दिन आप अगर बिलेबल नहीं हो तो भी आपका अप्रेजल नहीं होगा। और वो मेरा हो रहा है दिसंबर में। तो क्योंकि मैं अभी दिसंबर में 4 मंथ बाकी है और उस टाइम तक अगर मुझे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल के मैं बिलेबल नहीं हुआ तो मैंने जितनी मेहनत की थी 1.8 ईयर्स में, उसका मुझे कोई भी अप्रेजल वगैरह या कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दैट मेक्स योर डिसीजन लिटिल इजियर ना, देन टेक अप दिस थिंग। तो आप बिलेबल भी हो, आपका अप्रेजल भी हो जाएगा 4 महीने में, फिर देखो क्या होता है। लेकिन अप्रेजल साइड, इनका जो अप्रेजल है वो लाइक जो अच्छा वाला होता है वो तो देते टॉप 1% को, और अरे यार, उनमें भी वो सब हमें जो ठीक है ना। मिलेगा। अभी अब देख, सब चीज नहीं मिलेगी ना, अभी जो मिलेगा मिलेगा, और क्या कर सकते हैं अभी। तो फाइन ना। इसलिए मैं क्या सोच रहा था कि अभी जैसे कि मैं अगर सीजी के बेंच पे आ जाऊँ, वो आने में भी एटलीस्ट अभी 1 महीना तो है, और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि सीजी के बेंच पे कुछ नहीं तो 3 महीने तो मिल ही जाएंगे कम से कम। ओके। तो मैं इस बारे में सोचा था कि थोड़ा डीएसए और ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँ और ये लाइक स्विच का भी ट्राई कर लूँ मैं साथ साथ में। तब तक मेरे एक्सपीरियंस में भी एटलीस्ट 2 इयर्स तो आ जाएंगे वहाँ पे, तो क्योंकि मैं फिर एलिजिबल हो जाऊंगा अच्छे खासे कंपनीज के लिए। तो मैं डीएसए करने बैठ रहा हूँ, बार बार मैंने प्रैक्टिस कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन जो इंट्यूशन बिल्डिंग बोलते कि आपको क्वेश्चन देख के सब समझ आएगा कि कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, मैंने हजारों चीट शीट बना ली, सब कुछ कर लिया ट्राई। मैंने वो जो कॉन्टेस्ट होते हैं वो देने का ट्राई कर लिया, फिर भी जो इंट्यूशन है वो बिल्ड नहीं हो रहा। कोई नया क्वेश्चन देखता हो तो पूरा ब्लैंक हो जाता है। टाइम लगता है बिल्ड होने में, इट्स नॉट दैट इजी। सी, ओके, लेट्स कट दिस कन्वर्सेशन शॉर्ट। इफ यू वांट टू टेक अ सेफ राउट, take up this new assignment. If you want to risk it a little bit, then go on the bigger pool. But it puts pressure on you from the company point also, and because anything can happen at any time. There is no guarantee, and you can't blame the company, right? So these are the two choices you have. If I were to give you an honest opinion, take the safer route today. अगर आज मार्केट अच्छा होता ना, I would have told you risk ले ले,
मार्केट डिफिकल्ट है, इसलिए ध्यान से अपना बैकएंड सिक्योर करो, पहले उठा लो टेस्टिंग वाला, कोई बात नहीं। तो दैट्स द वे टू लुक एट इट। ओके, सो लाइक देखा जाए तो अभी ये जो मेरा एक्सपीरियंस टेन्योर है लाइक 1.5 2, सो क्या Because I इसमें have to रिमोट talk जॉब? to other people also, यार, they're waiting for a while. दिस लास्ट क्वेश्चन हाँ, दिस लास्ट क्वेश्चन हाँ। सो इस एक्सपीरियंस में क्या रिमोट जॉब लाइक एक्चुअली पॉसिबल है? क्योंकि जो यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं इसको फ्रेशर में कॉलेज में मिल गई रिमोट जॉब वगैरह, तो हमारे केस में ये पॉसिबल है? भैया पहले इंडिया में नौकरी ले ले, बाकी विदेश में बाद में देखेंगे ना, है ना? या ओके, थैंक यू सर। मतलब पहले मोहल्ले वाली तो पटा ले ऐश्वर्या राय को, बाद में देखेंगे। एक वो भी इशू है, आई एम मैरिड, सो और ज्यादा प्रेशर है मेरे पे। बस फिर ले ले, फिर उठा ले टेस्टिंग, क्या है फिर क्या सवाल कर रहा है? चल, ओके बाय। ओके अब्दुल, गो अहेड प्लीज। सॉरी यार, दिस टुक अ व्हाइल, इट वाज कॉम्प्लिकेटेड। First of all, how are you? वेरी गुड यार, आई एम टायर्ड नाउ। Okay. So बेसिकली मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर बैचलर्स कर रहा हूँ और फाइनल ईयर के अंदर हूँ मैं। और अभी मेरा इंटरेस्ट क्योंकि डेवऑप्स और क्लाउड की तरफ था, तो मैं उसी के अंदर मैंने पिछले 1 साल में काम किया और अभी मैं एक पेड इंटर्नशिप कर रहा हूँ। सो बेसिकली पाथ तो मेरा बिल्कुल ठीक जा रहा है, जो मतलब मैं अगर अपने पीएस को भी देखूँ तब उस हिसाब से मेरा बिल्कुल ठीक जा रहा है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मेरे कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो उनसे बात हुई जो अभी एमआईटी के अंदर बैचलर्स कर रहे हैं। वो बेसिकली मेरे बैचमेट ही हैं, लेकिन वो एसएटी दिया उन्होंने और 1 साल गैप ईयर लिया और फिर वो एमआईटी के लिए चले गए। देन आई थॉट कि मैं यहाँ पे ठीक कर रहा हूँ लेकिन मैं इससे ज़्यादा कर सकता था, और मैं अगर ट्राई करता तो मैं शायद एमआईटी भी चला जाता और वो एक्सपीरियंस इस एक्सपीरियंस के मुकाबले में 10x है, राइट? मतलब 15x 20x है। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से अटकी हुई है कि मतलब मैं सुबह से आई शुड डू द इंटर्नशिप वर्क, बट बैक इन द माइंड आई एम थिंकिंग अबाउट दैट कि व्हाट इज द अवेयरनेस क्वेश्चन ऑफ अब्दुल? यस द क्वेश्चन क्या है? इज मेरे माइंड में ये है कि अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो उसकी इंफॉर्मेशन होना इंसान को बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब नहीं कर पाते, या क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज वो काबिल होते हैं लेकिन उनके पास वो उनको नज़र नहीं आ रही होती अपॉर्चुनिटीज। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि मतलब मेरे दिमाग में ये थॉट जो है वो क्लियर हो जाए, या फिर मैं मास्टर्स के लिए या किसी और के लिए अप्लाई कर सकूं उधर? जब आपके फ्रेंड्स सैट के लिए अप्लाई कर रहे थे तो आपने क्यों नहीं किया अप्लाई? मुझे वो उस वक्त मेरे से कांटेक्ट में नहीं थे, बाद में अच्छा, मतलब बाद में बात के दोस्त, ठीक है, फेयर इनफ। तो फिर उस टाइम तो आपको पता ही नहीं था ना ये ऑप्शन, यस, राइट? तो देन देयर इज नो पॉइंट ब्लेमिंग। आपको उस टाइम ये पता था कि एसएटी करके यूएस जा सकते हैं, वहां मास्टर्स कर सकते हैं, ये सब पता था आपको तब? शायद नहीं पता था। हाँ, इतना नहीं पता था डिटेल में। तो जो चीज पता ही नहीं उस पे तो डिसीजन आपने अपने हिसाब से तो ठीक ही लिया है ना? तो देखो, यू विल ऑलवेज हैव पीपल हु आर डूइंग बेटर देन यू, राइट? यू विल आल्सो हैव पीपल हु आर डूइंग वर्स देन यू, है ना? अब मेरा भी 20-22-25 साल का एक्सपीरियंस है, मैं एक सर्टन पैसा कमाता हूं, मेरी सैलरी है। अब मेरे से कम एक्सपीरियंस वाले मेरे से ज्यादा पैसे भी बनाते हैं, और मेरे से सीनियर लोग भी हैं जो मेरे से कम पैसे भी बनाते हैं। ये तो हमारे पे हो रहा। आप अभी इंस्टाग्राम खोल के देखो, आपको लगेगा सारी दुनिया ही घूम रही है, साला मैं ही फुद्दू बैठा हूं यहाँ पे कमरे में, रात को 12 बजे लाइव कर रहा हूँ। कितने बजे पाकिस्तान में अभी? आधा घंटा आगे पीछे है? अभी 11 बज रहे हैं। 11? अच्छा, पीछे तो ओके। तो अभी मतलब और कोई काम नहीं है यार हम लोगों को, अभी इंस्टाग्राम खोलो, सारे आपके दोस्त घूम रहे हैं। तो ये तो अपने पे फालतू प्रेशर लेने वाली बात है ना यार।
है ना? तो ऐसे सोचते रहोगे तो जिंदगी आराम हो जानी है, कोई फायदा नहीं है। ऐसे तो बड़े स्ट्रेस है जिंदगी में लेने वाले, है ना? तो आज तक जो किया है, यू हैव डन इट ऑन द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज, यू हैव टेकन द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू न्यू, एंड दैट has served you well. It is fair. So trust yourself and go with that. It's as simple as that, right? As your awareness increases, as your knowing increases, your decision making capability will improve. That's how it is. Right. बाकी स्ट्रेस लेने का तो इंस्टाग्राम है ही है, फिर तो खोल ही ले, है ना? Yes. तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आज इफ यू बीन इन द स्ट्रीम फॉर द लास्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स, हर बंदे के अपने अपने फाइट चल रही लाइफ में, Right. कर रहे हैं ना सब अपना हिसाब से। Exactly. Yes. ठीक है, Thank you. ओके, थैंक्स अप, ऑलराइट। शमक, हाँ जी, गो अहेड प्लीज। Hello, sir. Thank you so much, sir, for doing this for everyone. I really appreciate your effort और thank you for your time. So I'll keep it short and crisp, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो मैं 2020 पास आउट हूँ और पहले मैं स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज बैचलर्स किया और फिर मैंने जैसे जो जॉब मिला पकड़ लिया बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजन, और फिर 2 साल ऐसा नॉन टेक्निकल एज एनालिस्ट काम किया। उसके बाद साइड बाय साइड पढ़ता रहा एंड देन आई क्रैक्ड क्लाउड इंजीनियर जॉब। तो विच कंपनी ही था वो, और उसके बाद सर्विस कंपनी था। और जैसे ही मैंने ज्वाइन किया बेंच पे था 1 साल, आई डिड नॉट गेट एनी प्रोजेक्ट, और फिर मैं वहाँ से निकल गया और फिर दूसरा डेवऑप्स का इंटरव्यू क्रैक किया और मैं अभी वहाँ 2 साल से हूँ। तो प्रॉपर ऑन पेपर 3 इयर्स डेवऑप्स एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरा काम क्या हुआ 2 इयर्स ही है। और यहाँ पे मैं अभी AWS, टेराफॉर्म और एंसिबल इस पे ही काम कर रहा हूँ। जेनकिंस, देयर इज नो पिक्चर एंड डॉकर और कुबरनेटिस पिक्चर में है ही नहीं, बेसिकली इंफ्रा में ही है। लेकिन मेरा क्या है कि मैं 2 साल से डायरेक्ट घुसा और इस पे करने लगा। तो मैं अभी क्या फंस गया हूँ कि ना ही मैं कर रहा हूँ, जो पाइपलाइन चला रहा हूँ, टेराफॉर्म का अंडरस्टैंडिंग है, लिनक्स का अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आप जो अपने वीडियोस में बोलते हैं ना फंडामेंटल स्ट्रांग, वो नहीं है मेरा। और दूसरा, मैं अभी बहुत डिलेमा में हूँ और बहुत स्ट्रेस में हूँ कि मैं अभी अपने जाके पूरा बेसिक्स सुधारूँ, पूरा नीचे से शुरू करूँ एकदम, लिनक्स का, टेराफॉर्म, AWS पूरा, या फिर मैं स्पीड रन करूँ, ऊपर ऊपर समझ लिया, आगे का पढूं, AI पढूं, क्या करूं, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पूरा जीरो से शुरू करूं। अभी मेरा बस इंटरमीडिएट ऊपर ऊपर का ही अंडरस्टैंडिंग है, पता चल रहा है क्या हो रहा है, लेकिन एकदम आप मेरे को बोलोगे एकदम स्क्रैच से पाइपलाइन बनाओ तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा, वैसा है। और फिर मैं वही सोच रहा हूँ कि आप, और मैं बहुत यार मार्केट को लेके भी पैनिक हो रहा हूँ, जॉब्स भी अप्लाई कर रहा हूँ, 0 कॉल्स, नो कॉल्स एट ऑल। तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, आगे का पढूं या फिर पीछे से शुरू से जीरो से शुरू करूँ, वो समझ नहीं आ रहा। हाउ इज योर वर्क प्रेशर राइट नाउ? वर्क प्रेशर इज चिल, हाँ मिलता है। यूके शिफ्ट है तो इट स्टार्ट्स एट 12 to 7 और मैनेजर भी बहुत चिल है और ठीक है, तो टाइम मिलता है पढ़ने का। करेक्ट, हाँ ठीक है। मोटिवेशन का भी इशू है, मुझे थोड़ा स्किल अप करने का मोटिवेशन उतना नहीं आता है। मोटिवेशन के तो इंजेक्शन है मेरे पास, वो दे देता हूँ मैं। सॉरी वो साइड बिजनेस शुरू करता हूँ मैं अभी, मोटिवेशन के इंजेक्शन। ओके तो ओके, और आपकी टीम में कितने लोग हैं? है अराउंड 30 लोग हैं, 25 से 30 लोग। हाँ अच्छा, ये बड़ा विच कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनी है। ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड। और मेरा सैलरी भी लाइक अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस काफी कम है, तो वो भी प्रेशर है। ओके, 2020 पास आउट। गुड पार्ट इज दैट, हाँ एज 2020 पास आउट और मेरा 5 इयर्स होने जा रहा है वर्क एक्सपीरियंस और मेरा सैलरी अंडर 10 LP है। ओके, ठीक है, which means you are looking at a job change in the next year for sure. Correct, absolutely, within this year actually. हाँ, within this year, early next year. तो that should be your focus then. Yes, exactly. Right, कि next job मुझे क्या चाहिए और उसके लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा. Exactly. How do I crack? Right? तो अभी, which means you also have to see on how you can better pitch your current work. Correct. Right, so that is one. Secondly, see, आपसे जाके डायरेक्टली कोई लिनक्स पूछेगा नहीं अभी,
क्योंकि 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, 5 साल का हो गया है, राइट? वो जाके लिनक्स की कमांड नहीं पूछना चाहिए आपको, बट आपके जॉब में जो रिक्वायर्ड है, राइट, दैट यू हैव टू गो इन डेप्थ. ओके, सो फॉर एग्जांपल आपने बोला आप जेनकिंस यूज करते हो, तो उसमें ग्रूवी स्क्रिप्ट से लिखते हो क्या पाइपलाइन एक्सपोर्ट? yes. ग्रूवी स्क्रिप्ट लिख सकते हो अच्छे से नहीं. फ्रॉम स्क्रैच? नहीं. So that should be your focus then. Okay. वही Because आपको फंडामेंटल जब की बात आ ग्रिल गई. करेंगे तो आपको ग्रिल करेंगे वो करंट एक्सपीरियंस पे करेंगे ना, तो दैट शुड बी योर फोकस. मैं पाइपलाइन चला रहा हूँ इंस्टेंस बिल्ड करने के लिए, लेकिन मेरे को बैकएंड में क्या हो रहा है वो एग्जैक्टली नहीं पता. हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, तो फिर ग्रूवी सीखो पहले, उसके बाद जेनकिंस का शुरू से पाइपलाइन कैसे चलता है वो देखो, जब फट जाता है उसको कैसे करना, तो आपके जॉब में जो रेलेवेंट है उसमें डेप्थ में चले जाओ. ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट थिंग विल बी व्हाट काइंड ऑफ पोजीशन यू वांट इन द नेक्स्ट रोल, और उसके लिए क्या डेल्टा है. वो ऊपर वाला काम है, ये नीचे वाला काम है, ये दोनों करने पड़ेंगे आपको इन द नेक्स्ट 2-3 months, एंड देन यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग. ओके. और ऐसा है, अगर मैं इतना सीखने लगा और मेरे को लग रहा है कि बाय द टाइम मैं जब सब कुछ सीख जाऊं, जेनकिंस अच्छे से लिनक्स सब कुछ, तो बहुत लेट हो जाएगा. तब तो कुछ और ही चीज, मतलब आजकल तो हर दिन चेंज हो रहा है, वैसा हो रहा है. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ चेंज नहीं हो रहा. आपकी कंपनी चला रही ना आज तक जेनकिंस, घंटा फर्क पड़ गया उनको, कुछ नहीं बदल रहा है. घबराया मत कर, फालतू के यूट्यूब वीडियो देखने बंद कर दो. ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि कोई जो बात मैं अभी कर रहा हूँ उसका मेरे को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, सिर्फ टास्क कंप्लीट करना नहीं है मेरे को. ओके. यप. ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम. ओके गौरव, गो अहेड प्लीज. हाय सविंदर सर जी. हाँ तो जी. मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा है कि जब मैं मैनेजर के साथ कॉल्स पे जाता हूँ, द वन ऑन वंस आई विल हैंडल इट वेरी वेल, नो इश्यूज. I like even every one-on-one I have a couple of POCs that I have done. I show him, I explain it to him. The only problem comes when I try to ask him when will I get promoted. Like I don't straight up ask him. I like that's not the way you ask your manager, right? Yeah. So Yeah. so basically I just like do a polishing on it. Say that what do you think I need to do to get to that next level or something like that. The words that means that I need a promotion, right? And to be very fair, when I do that, it circle backs down to me saying that whom do you see like yourself in a senior role. Like क्वेश्चन उल्टा पड़ जाता है मुझ पे कि भाई तुमको क्या करना है. उल्टा मैं पूछ रहा हूँ कि भाई एक्सपेक्टेड क्या है, तो बता, तो मैं आगे करता हूँ कुछ तो. राइट, दैट्स ऑल. नहीं भाई, वो यूएस में वो वॉच नहीं कर रहा, मैं उतनी गारंटी लेता हूँ. अच्छा ठीक है, उतनी गारंटी लेता हूँ, दैट्स फाइन. तो और वो हो ये जाता है कि मैं उसको पूछता हूँ कि भाई करना क्या है, और वो मेरे को गोल घुमा के क्वेश्चन मेरे पे ही फेंक देता है कि भाई तू ही कोई देख ले, मेंटर वेंटर कोई देख रहा है क्या. और नाउ व्हेन आई डू दैट एनालिसिस, राइट, तो मुझे समझ में आता है मैं लीड वाले काम कर रहा हूँ, मैं तो सीनियर का प्रमोशन मांग रहा हूँ. तो देयर इज समथिंग गैप बिटवीन either I'm not able to explain him, or he does not want me to do like give me the promotion. I am not completely sure about thing. How long have you been with this organization? How many years? ये मेरा as a fresher I joined it and completed 4 years right now. 4 years. Okay. Yeah. So see, the kind of answers your manager is giving, they should not be given to somebody with your level of experience. Okay, it is a decent answer to give somebody with 10 years experience, that is understood, but not at 3-4 years experience, because you don't know, you have to be told. Okay, right. So that itself tells me that there is some gadbad. Doesn't give me a very positive vibe to the whole thing. No, Okay? not really.
Now, now the question is, how do you handle this? Yeah. Right. So, how has been your rating in the last 2 years? Do you have the same manager? Yeah, same manager. So basically, in the last, if I wanted to give you a idea, in the last 4 years I've been in that organization. The I've seen throughout the team. I only in the team we had last year the promotions across the teams, like PMO, devs, QE, everyone. And for some reason I felt like I why I was left out. Like everyone else is promoted, why I left out. And I didn't really had a courage to ask him that. But when I just checked him, went through his LinkedIn, and I was shocked. Every 2 years he was getting promoted. Like he joined the organization as a senior, and now he's at the VP level. So I don't really want to get in, have that panga with him, to be very fair. Yeah, of course. And So it's you like, didn't I answer don't my know. question. How has Yeah. been your ratings in the last 2 years? Are they good? Very good? Like it's good. 1 year, 1 year very good, and the previous year is good. Okay. So see, there are multiple reasons why you could not be promoted, and sometimes it is just bad luck also. Right? Sorry, I was just looking at some comments. People are having fun here. वो तो चलते रहता है इंडिया में Sorry. अपन लोग. So, okay. So, see, there could be multiple reasons for not getting promoted. It could be bad luck. It could be like he had to choose two people and you didn't make the cut. So, what I'm saying is it might not necessarily be your mistake. Sometimes it is circumstances also. It depends. Right? Now, to be fair, in these 4 years, you've not been promoted at all? Not at all. Like I got a decent hikes though, but not the promotion. Not promotion. Okay. So then that is something to worry about. Because 4 years में एक promotion तो बनता था. एक तो बनता था. That's what I. एक तो बनता था. Correct. So which means you need to have a clear conversation with him that, hey, what is missing? Why am I not getting promoted? And it is you are within rights to have that conversation. Right? And he should be upfront with you. You have to ask that question that, am I lacking something? Or is it a procedural thing? Or what is blocking it? Last time I recollect when I asked him the same question, like what should I do, and he straight up front told me that your updates are not consistent and that and that. But when I so basically I checked that channel where we maintain the updates and all, and I just went ahead with it and seen that I'm not just the one guy. Like whole team is not doing the regular updates. They are putting weekly. At least I'm putting 2 days updates there. And I don't know, like it felt like he just went through the operational things and put a couple of things that I missed out that should have been there. But when I look at I the bigger understand. picture, you are not able to see the products that I have delivered that in the production. And to be very fair, when I say this, I'm the only one resource in India that you have, and you are really not able to promote me. That's the question that I have basically. Like Okay. you get a separate So budget for US team, you get a separate budget for India. So I don't know. yeah, so see, sometimes it could be a perception problem also. Right? There is one thing to do your job correctly. There is completely another thing on how you project it. And especially because this guy is sitting in the US, you're not meeting him face to face. Not Right? really. Have you ever met this guy in person? Yeah, like yearly he does once or twice into One trip. the Okay, one trip. But he doesn't bump into you. Everybody else he's meeting in person.
No, like I am the first point of contact when he comes into the office, and I No, am in the the US. last point. No. Yeah. The others in your team he's meeting on a regular basis, right? No, so the complete team is remote. Like one person is sitting in Everybody is remote. the San Diego, one person is sitting in Acha, so San doesn't Mateo. matter. So Doesn't doesn't really matter. matter. So it could be a perception problem. He has a certain perception about you which is not very positive. Possible. Right? So you see, this is a tough one now. You have to figure out what is his style of management. See, अब काम क्या कर रहे हो, it doesn't matter. Ultimately, कौन कैसे दिखा रहा है, that matters. Right? So if he's saying that one of his comment is that you are not giving regular updates, right? Now your answer cannot be that I am probably giving the best update out of 4 people. Doesn't matter. So you have to double click on that statement, and for the next 2-3 months you have to be more proactive in giving him updates. Not just giving, but making sure he's seeing those updates also. So I don't know if it will work in your context, but maybe set up a once a month meeting with him, dedicated one-on-one, and say, hey, in this last 1 month, this is the work that I have done. I just want to highlight it to you. That's one way of doing it. So basically you have to figure out what are the negative perceptions in his head and slowly, gradually work to fix them. And you should also have a proper communication with him to figure out कि भैया, why am I not getting promoted? What is your expectation that I am not able to match? Right? These are the 2 things that you should do. So I should be upfront when I ask for a promotion, right? Not just do. You can be upfront because it's been 4 years. Yeah. So it's not that you're asking for a promotion. Your question should be, hey, what am I missing? What do I need to get to be able to do so that I'm considered for the next round of promotion? What am I missing? Right? Is it something on my work? Is it something on my communication? Is it something on my reporting style? Is it something in the way I work? What is it? Is it technology? Is it my soft skills? Is it my speaking skills? Is it my interaction with the team? What area am I lacking in? Yeah. And then you have to listen, because it doesn't matter what the fact is. What matters is what this bugger thinks. Okay. I just want, for the comment section, I just wanted to say the manager is pretty good. He doesn't really ask me any updates on any products. I have to be proactive giving him the update and that. But even he doesn't even ask me if I put up a PTO. It just accepted. He doesn't even double checks with me, and he knows that I have everything managed myself. He don't need to manage me like that, and he doesn't even bother doing that. And when I say if I'm distracted due to some reasons, he eventually finds it out and he tries to communicate with me to get it out of my system, like what's going on in your personal life, is there affecting something like that. And That's he's a good. pretty good manager when it comes to the manager level things, to be very fair. Sure. But when it comes to promotion, then it becomes kind of an issue for me to communicate with him. No, so have a candid conversation with him. I think he will understand what you're trying to say. But set it up formally. Don't make it casual. Right? And tell him that, hey, I want to get feedback from you on why I'm not getting promoted. I'm a little concerned about this. Put it up front. He should know what is the agenda of the meeting so that he'll prepare. Yeah. Okay, don't make it casual. This is not a, just by the way conversation. It's a serious conversation. So have it that way. Okay? Yeah. Okay. Thanks, mate. Thank you. All right, guys. It's been 2.5 hours over 12 a.m. in India.
So thank you so much for joining in. And if a couple of you I couldn't talk to, we'll talk in the next week. Thanks, guys.